receptor clip house. Hello, sir. So your audio is breaking. It's not audible clearly. It is breaking in between. Hello. Hello, Prasad sir. ऑडिओ खूप ब्रेक होतोय म्हणजे ऐकू देत नाही आता तुम्ही इतके लास्ट काय नाही आलं वायफायला कनेक्टेड आहात तुम्ही आता हा नाही हे मोबाईलचं नेट आहे. हा मग वायफायला कनेक्ट व्हा म्हणजे ते तुम्हाला चांगलं कनेक्टिव्हिटी मिळेल बरं ओके. आणि तुम्ही अनुभव करता नाही
Hello? Hello? Yes, sir. Now it is audible, sir. Hello. Now it is audible. So, Go or ahead, what sir. we were saying, that even in case of COVID, the the presentation of disease is going to depend upon which receptor is there and which receptor is having in which organs. So every organ has to do with it, and every organ, is the audio okay now? Sir, it is okay, Yes, sir. sir. It's clearly audible. It is okay, no? Yes, Audio sir. okay, yes. Yes. So all I was saying that even in case of modern disease, the presentation is going to depend upon where that virus receptor is going to be, and that is what forms the basis, the anatomical and physiological basis for practice. And unfortunately, we people say that our fraternity, that department, or Kriya Sharir is somewhat non-clinical, but that is certainly not the way. In fact, learning, first of all, in the first year we learn anatomy, physiology, in second year we learn pathology, pharmacology, and finally in the third year we learn about the medicine and surgery. The formulation, this, although we have adopted, we must understand that in Vagbhat Sutrasthan 1, what Vagbhata has quoted, he has quoted the Chikitsa of Vata, Pitta and Kapha as Ghruta Taila and Madhu, or he has quoted as Basti Vireko Vomanam. Charkacharya in Sutrasthan, in his first chapter, in his first Chatushka, what that Chatushka is, that is Beshit Chatushka. In the Charak Sutrasthan chapter 1 only, Charkacharya is starting with gunas of Mutra, gunas of then Dugdha Varga, Mutra Varga. So Hello? Ayurvedic anatomy, physiology, hello? Sir, can you switch on your video? Like, it will be better, I guess, if you switch on your video. The audio is perfectly clear. Only switch on your video, so Yes. we'll be able to see you. Okay. Yes, sir. Okay. Done, sir. Okay. Yeah. So the thing is that Ayurveda in them, and that is why we need to understand all these things with their application, otherwise they will become simply theoretical. Now let us talk about the original, our topic, what we are going to talk about, and that is the concept of ashraya and ashrayi bhava. As you can see here in the PPT, the title is Critical Understanding of Ashraya Ashrayi Bhava. What is the meaning of ashraya and what is the meaning of ashrayi? The meaning is ashraya means the one who is giving residence, the residence itself or the abode itself, whereas what is ashrita or who is being their ashrita, the abode and resident. This is the relationship. So the abode is ashraya, whereas ashrita is the resident in it. So this relationship is inseparable. And this relationship is because everybody needs a home. Even that receptor cannot lie in everywhere in the body. That AC2 receptor has to be there in nose. It has to be there in epithelial tissue. And accordingly, its clinical manifestation is going to differ. Accordingly, clinical presentation is going to differ. In a similar fashion, in Ayurveda, we have the concept of dosha and dhatu and mala, wherein we consider dos as dosha only, and we consider dhatu and mala as dusha, because dosha, they vitiate doshas, and in our classical framework, we consider doshas as home, whereas dosha as the resident in that abode. And in this verse, what they have explained is which dosha is going to make home for which dosha. That is all about. So to start with, this is the verse from, this is the third slide, and this is the verse from Ashtanga itself. What does that verse is? The verse says, Tatra asthini sthito vayuho, pittam tu sweda raktayoho, shleshma shesheshu, tenesham ashraya ashrenam mitaha. That's it. Yadekasya tadanyasya vardhana kshapanaushadam. Asthi Maratayorneva Prayo Vriddhiri Tarpana. So these are the two verses. Those talk about this Ashraya relationship. What does they mean?
They simply mean tatra asthini sthito vayu, vayu resides in asthi, pittam tu sweda raktayoho, pitta resides in sweda and rakta, and shleshma shesheshu, in remaining all the dushas, there is shleshma. And their relationship is tenesham ashraya ashray shridam mitha. So the relationship they share is that of ashraya ashray. This is what says Vagbata in first verse. And Vagbata follows in another verse that yadekasya tadanyasya vardhana kshapanaushadam. The dosha is going to increase. When you increase the dosha is going to increase, except that of asti and vayu. That's it. This is what the verse says. Now coming to the next slide, where does this verse comes in? Adhikarana, slide number 4. The Adhikarana here is Ashtangradaya Sutrasthan Doshadi Vijnaniyam, that is Ekadasho chapter, that is 11th chapter. While making this syllabus of BAMS, we have just picked some verses from classics, and we have made all these subjects Sharir Kriya, Sharir Rachana, Dravya Guru Vijnana, and so on. But very unfortunately, we are not giving importance from where the verse comes. What is the adhikaran of it? What was the context? Like we see even in social media, somebody said something, some minister said something, and media just cherry picked that sentence. कि मिनिस्टर ने ऐसा कहा, and how can he say like this? And इससे महिलाओं का अपमान हो गया, इससे देश का अपमान हो गया, इससे आर्मी का अपमान हो गया. Minister came up with this sentence. But we just don't understand what was the minister's context. Where was he invited? What was the target audience? What was he earlier speaking? Our media skips all these things. And they just pick that minister's some sentence and they make their news and they make their TRP. In a similar fashion, when we have picked verses from classics and we have made these 14 subjects, we must be very keen from where the verse comes. What is the adhikaran? For example, let me tell you that Lokapurusha Siddhanta, we always say that Lokapurusha Siddhanta, and it has got clinical application. So outside the body there is water, inside the body there is water. You get dehydrated, you have some saline water, and that's it. That is what we speak about. Whenever the topic of Lokapurush Samya comes, we just speak about the clinical application and we just speak about the thing that bahar bhi prithvi hai, andar bhi prithvi hai, bahar bhi jal hai, andar bhi jal hai, and usko use karo and treatment karo. But what is the original context? In Charak Sharir Sthan, if you see, the context is Lokapurush Samya ka gyan agar aapko ho gaya, so that will lead to Satya Buddhi. And Satya Buddhi is going to heal your mind. And then your healing of mind will be helpful for your healing of body and mind. So for making that Satya Buddhi, that मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अंदर भी वही है जो बाहर है, ये समझने के लिए वो लोकपुरुष सिद्धांत कहा गया है. So in a similar fashion, there are all the verses, they come from which context we need to understand. So here the adhikaran is doshadi vijnaniya, and slide number 5, as you can see here, the context, what is the context? इसके आगे का पीछे का वर्ष क्या है वो देखना पड़ेगा. वो है दोषादीनाम यथा स्वंच विद्यात वृद्धि क्षयो भिषक क्षयण विपरीतानाम गुणानाम वर्धनेन च. सो हमने दोष आदि की वृद्धि और क्षय बता दिया, और क्षय को आप विपरीत गुण से ट्रीट कर सकते हो. वृद्धि मलानाम संगाश्च क्षयं चाति विसर्गतः मलोचितत्वाद देहस्य क्षयो वृद्धिस्तु पीडनः. मलोचित होना ये मलो की वृद्धि का लक्षण है, अति प्रमाण में बाहर पड़ना ये भी उनका लक्षण है. ये वर्ष के बाद में वर्ष आता है तत्र अस्थिनि स्थितो वायु पित्तम तु स्वेद रक्तयोः श्लेष्माशेषेषु तेनेषाम् आश्रय आश्रयणाम मिथा. फिर अगली लाइन में कहते हैं यदेकस्य तदन्यस्य वर्धनक्षपण औषधम. फिर अगले श्लोक श्लेष्मणा अनुगता तस्मात् संक्षयस्तद् विपर्ययः वायुना अनुगतो यस्मात् वृद्धिक्षय समुद्भवा. तो ये कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके आगे क्या चल रहा था, इसके पीछे क्या चल रहा है? तो इसके पीछे ये चल रहा था कि दोषों की हमने क्षय वृद्धि बता दी.
सो दोषों के क्षय वृद्धि के कॉन्टेक्स्ट में हमने ये समझना है, न कि मीडिया जैसा एक आध सेंटेंस को उठा के उसी को लेके न्यूज बनाता है, वैसे हमने नहीं करना है। हमने ये कॉन्टेक्स्ट समझना है, एंड दैट्स व्हाई ये कॉन्टेक्स्ट आपको टीका में मिलेगा। आपके सामने स्क्रीन है, स्लाइड नंबर 7, slide number 7 and slide number 8. So I am just going through slide number 7 and 8. तो हमारा ये आश्रय श्री भाव का रीडिंग हो जाएगा और फिर हम इस पे कमेंट्री की बात करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे अरुण दत्त क्या क्या कहते हैं, तत्र तेषु वातादिषु मध्ये अस्ति वायु स्थितः। यस, वायु अस्थि के अंदर है। पित्तम तो स्वेदो स्थितः, पित्त स्वेद और रक्त के अंदर है। ओके, एंड देन कहते हैं कि यतश्चैव आश्रय आश्रयो भावो दोष धातुनां तेन हेतुना आश्रय आश्रयेण मिथः परस्परं यदेकस्य आश्रयस्य वर्धनम तदन्यस्य आश्रयेणो अपि वर्धनम। मतलब कि अगर आश्रित बढ़ गया तो भी आश्रय बढ़ेगा, और आश्रय बढ़ गया तो भी आश्रित बढ़ेगा। ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज। ननु एवं अश्नो वाताश्रय, अब ये वात का ऐसा क्यों हो रहा है, तो वाट इज द एक्सेप्शन टू इट, ऐसा उन्होंने कह दिया। And now here the important tika on the second page, slide number 8, please. So here it is, what they have said, that prayograhanam, this is nothing different he has quoted. Sancho vayuna anugataha. So this tika is almost, it has got nothing specific or nothing different. What is important is what Ashtanga हृदय टीकाकार हेमाद्री is quoting, आयुर्वेद रसायन टीका। जस्ट सी व्हाट इट हैज स्टार्टेड। आर, उसके आगे का देखिए क्या है आपकी स्लाइड में, दुष्याणाम वृद्धिक्षय हेत्वादि विज्ञानार्थम दोष दूष्यो आश्रय आश्रयी भावम आह। ये जो दोष दूष्य का आश्रय आश्रयी भाव का टॉपिक बीच में ही आ गया, ये क्यों आ गया, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो वो है दूष्यों की वृद्धि और क्षय, इनके हेतु के ज्ञान के कॉन्टेक्स्ट में। सो दूष्य क्यों बढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा, मतलब दोष बढ़ने से भी दूष्य बढ़ सकता है, उल्टा भी है, दूष्य बढ़ने से भी दोष बढ़ सकता है, इसका वाइस वर्सा भी है, क्षपण भी हो सकता है। सो दूष्याणाम वृद्धि क्षय, उनका जो हेतु है, एंड नॉट ओनली हेतु, हेतुवादी, उसका हेतु भी है, फिर उसका ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा वो भी हमें सोचना पड़ेगा। इस सबके विज्ञानार्थम, इसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यहाँ पर दोष और दूष्य के आश्रय आश्रयी भाव को समझते हैं। तत्र तेषु दोषादिषु मध्ये, तो अस्थि में वायु हो गया, स्वेद और रक्त में पित्त हो गया, शेषेषु श्लेष्मा, बाकी सभी में श्लेष्मा है। सो व्हाट डज दैट मीन, यहाँ पे अष्टांग हृदय बहुत ही प्रिसाइज है, सॉरी हेमाद्री का टीका बहुत ही प्रिसाइज है। इट इज हेमाद्री हु हैज कोटेड कि शेषेषु श्लेष्मा में शेषेषु का मतलब है रस, मांस, मेद, मज्जा एंड शुक्र, ये हम लोग मीनिंग लेते हैं, लेकिन अक्सर हमसे रह जाता है। व्हाट वी यूजुअली स्किप इज मूत्र एंड पुरुष also. So Hemadri has here quoted that it is मूत्र and पुरुष also. So मलों में 3 मल है, उसमें जो मलों में जो 3 मल है उसमें जो स्वेद है वो पित्त के साथ चला गया, बाकी का मूत्र और पुरुष इनका संबंध कफ से है, ये हमने ध्यान में रखना है। अदरवाइज बाकी सभी धातुओं का संबंध कफ से है, अस्थि का वायु से है और पित्त का रक्त से है, ये सभी हम लोग तो जानते ही हैं। अब आगे जाके बात आती है कि व्हाट इट इज ऑल अबाउट, व्हाट द रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट। So the relationship is all about that ashrayi is dosha, slide number 10. Ashrayi is dosha and ashray dene wala, the abode is tissue, that is either your mala or your dhatu. So here in the slide number 10, as you can see, ashrayi is dosha and ashrita is tissue. So here we need to understand what this dosha and dhatu classification is. What this ashraya, yes, exactly this slide. Thank you, Prathamesh sir. So this is very important. We need to understand from where this classification of those dhatu mala came in. Because see, there are very different levels of abstraction
Human living is a very complex phenomenon, and everybody is there are only two super systems. One is nervous system and one is endocrine system. ये दो सिस्टम में आप किसी भी सिस्टम को बिठा सकते हो. आप रेस्पिरेशन को ले लो, आप कार्डियक फिजियोलॉजी को ले लो. What it is all about? It is all about its neural control, or it is all about its hormonal control. So ultimately, controlling phenomena are only two, that is nervous system and endocrine system. So these are different levels of abstraction. What is Ayurvedic level of abstraction? It is another slide, the previous slide, please. Previous slide only, dosh dhatu mala. So we are here just making a comment from where this classification came. This classification of dosh dhatu mala, this is a unique classification, and this is our Swashastra Siddhanta classification. When we say that our science has got its own terminology, its own epistemology, it is all about dosh dhatu mala. So what is dosh, what is dhatu, and what is mala? So dosh is a phenomenon that is more energetic and less structural. To keep it simple, it's not as word to word, but to keep it simple for a first year BM student, dosh is a phenomenon that is more energetic and less structural, whereas dhatu is a phenomenon that is more structural and less functional. Whenever structure is there, there is going to be some function. Whenever function is there, there is responsible some structure. You just cannot differentiate Shiva and Shakti. The concept of Shiva and Shakti is in the half that you must have seen that image. The sagittal section is there, and on the right half there is Parvati, and on the left half there is Shiva. So what that picture stands about, what that image says about, the image says that Parvati is the Shakti, and Shiva is he without Shakti he is of no use, he is of no power, he is of no power absolutely. So that's why in our rituals we go hand in hand. We pick up hand in hand together. It's not Jai Sri Ram, it's Jai Siya Ram, because Siya comes with Ram. So without Shakti, there is no functional ability of Shiva component. So doshas are the caption given by our scientists to those entities who are 99% functional but 1% structural. Where dhatu is something which is more structural, whereas less functional. Dhatu is something you can. So this is the basic class. And mala is again the term. Mala is the term. तू नहीं करता है, किसी को नहीं करता है। खेल रहा है वो कर करके निकल रहा है ऑलरेडी। अरे शादी करने में पता नहीं क्या तुझे नहीं करना चंदू चंदू Hello. So mala is the term used in two different contexts. One context is waste product, whereas one context is byproduct. So in this way, those they are energetic, they are more energetic and less structural. So they are going to need abode, and that abode is provided by your dhatus. And that is why if the doshas get vitiated, your dhatus are or doshas are going to be vitiated. Just wait a minute. Then Dr. Bharat, देखा है जन अपने को can you mute your? Just a minute. नंदन There's someone talking in between. I'll mute him. हाँ? वो बीच में चालू करना, अभी सर को अनम्यूट करना पड़ेगा। सर कहाँ पे है? हाँ नहीं सर, अनम्यूट ऑल नहीं सर, अनम्यूट कैसा? अभी क्या करूँ? करेक्ट है ना?
आ रहे कैसे म्यूट कैसे अनम्यूट कैसे करना सोते हाँ सर नाउ यू कैन कंटिन्यू सर Hello, Prasad sir. Now you can unmute yourself and you can continue, sir. I have unmuted you. Just unmute yourself and continue. There was some disturbance in between. क्या है? Hello. गए क्या? सर कहाँ पे? Hello? Hello? Yes, sir. Now you can continue, sir. There was some audio Okay. disturbance in between. Yes. Yes. So let us just jump to the slide number 13. Slide number 13, please. So let us start to understand it one by one. We will start from Kaphadosha. So Kaphadosha has got, That's the problem, the sir. font We are not- issue is there. Sir. Font issue. ठीक है, no issue. I will make it, no problem. Flip camera म्हणजे काय? Definitely. Yes. Yes, you can continue, sir. Yes. So here it is. I'm showing it on my laptop only. So here, as you can see, that Rasudhatu is there. Hello. Sir, So- you are connected to the mobile, right? I will. No, I'm connected to this only. Sir, continue, sir. We won't be able to see the PPTs, but you can continue, sir. Yes, sir. We are able to see. Yes. So let us start with the Kapha. Yes. So forget slides. I will be speaking only. So let us start from the Kaphadosh only. Even in Kaphadosh is having Ashraya relationship with what? It is having Ashraya relationship with Rasadhatu, Maus Dhatu, Med, Majja, Shukra, Mutra, and Purusha. So how these things are going to affect? Which are the Kapha types? Which are the gunas of Kapha? Those are associated with Vikurti of Rasadhatu is indeed a topic of interest, and where we can understand how we need to treat Kapha while treating the Rasavriddhi or Rasa-related conditions, and vice versa. How can we use exactly the different medications for Rasadhatu for the treatment of Kapha only? So if you go to the Charak Sutra Sthan 28, where they have mentioned the different those dhatu pradoshaja roga. What are the rasa dhatu pradoshaja roga? They are ashraddha, aruchi, asya vairasya, arasadnyata, rullasa, gaurava, tandra, angavarda, jvara, tama, pandurva, स्रोतसामरोधः क्लैप्य साधः कृशांगता नाशो अग्ने पयथा कालम वलयः फलितानि च. So these are the rasa pradoshaja roga. Just from rasadhatu we will understand only from kapha dosha relationship we will understand only rasadhatu in detail.
then we will go to Rakta, and then we will go to Vata. So this is I'm explaining very detailed. So Rasadhatu Vikruti Lakshanas, here they have quoted Ashraddha. Second is Aruchi. Third is Asya Vairasya. And fourth is Arasadnyata. These are four different shades. These are four different shades where the meaning of all of these four are associated with your taste. One's meaning is not having bhojan ke prati shraddha na hona, bhojan ke prati bhav na hona. Aruchi is tastelessness, whereas कि आप मुंह में खाने का प्रयास कर रहे हो फिर भी वो अंदर नहीं जा रहा है. And arasanyata stands for आपने खाया है लेकिन you are not able to recognize the taste. So these four symptoms, what is the abode for these four symptoms? The abode is mouth. These four symptoms are all about your tongue. And in the place in your abode, that is mouth, the ashraya, the dosha is there, is none other than your bodak kaf. So the bodako rasana sthai, the bodak kaf has got function of rasana, giving taste, giving the sensation of taste. See, taste is a very concept. The concept of Shadrasa is a very great concept in Ayurveda. You people have just admitted to Ayurveda, you are in first year BS. You people must have learned the Ashtanga, the Rasavidya chapter, where you must have gone through all those Shadrasas and their properties and etc. But let me tell you, just Google for the paper that where your body has extra tongue taste receptors. Taste receptors are not only on tongue, but they are there in your pleura, in your alveoli, in all your body. There are different taste receptors. When you will go and you will come to know the concept of taste is not only restricted to tongue, then and then only you will come to know that आयुर्वेद में सिर्फ इतना ही बोला है कि मेडिसिन का क्या है, षड्रस बोला है, या तो मीठा होगा या तो खट्टा होगा, या तो अरे ये तो कॉमन सेंस की बात है. इसमें मेडिकल साइंस कहाँ से आ गया? इसमें कुछ अपग्रेडेड मेडिकल साइंस हमको पढ़ा हुई है. आप हमको क्या पढ़ा रहे हो कि मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, षड्रस हो गया तो हो गया. इट्स नॉट लाइक दैट. The concept Shadrasa, the concept of taste is a very big concept. There are taste receptors even out. Your mouth is also the place for pravayu. Also the mouth is considered as place of prana. So you have two entities. One is prana, and another entity is bodhaka. What saliva significance is? The saliva physiology is again saliva physiology can be one our topic. But now, as we are facing COVID-19, everybody we are in the COVID situations. Let me tell you, your antibodies have different types. IgM, IgA. Where does this IgA is? Your IgA antibody is there predominantly in saliva. It is there in your GIT. It is there in your intestine. Why? Because your IgA has got function to keep antigen within secretions, so that when you will spit it, probably the antigen will also get spit. Antigen means you are first year BM students. Antigen means the pathogenic element, all that virus or bacteria, whatever has entered. So the IgA has got function. The saliva has got IgA, and the IgA has got function to retain the antigen in saliva only, in secretions only. Saliva is there in mouth, but in intestine you have another different secretions. So the function there is to keep them segregated, to prevent them from entering and then expel them. So bodak cough is really a very big phenomenon. It has to do with immunity also. It has to do with test recognition also. So when the recognition comes, it simply means that Shleshak cough has got part and parcel with nervous system also. Because it is about rasa jnana.
And here are the first 4 symptoms. हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग रस धातु की दृष्टि के symptoms देख रहे हैं. तो उसकी पहली लाइन थी अश्रद्धा, अरुचि, हास्य वैरस्य, अरसज्ञता. सो ये सभी टेस्ट से रिलेटेड सिम्टम्स आ गए. ये सभी सिम्टम्स किस ऑर्गन में आ गए? तो ये माउथ में आ गए. अनदर लाइन पढ़ते हैं. आगे की लाइन है रुल्लासो गौरवम तंद्रा अंगमर्द ज्वरः तमः. So what does this mean? Rullasa is jiva chalna, the feeling of vomiting. Gaurava is feeling of heaviness in body. Tandra is like feeling sleepy, feeling not drowsy but sleepy. Angamarda is body ache. Jvara is fever, and Tama is having blackouts. आंखों के सामने अंधेरा है. Now understand one by one symptom. We are talking about symptoms of rasa pradoshita vikara, and we are trying to understand its relationship with kapha dosha. For example, we have taken this case of rasadhatu. So rullasa, what does this rullasa means? Your body is trying to evacuate your stomach. आपको जीव चल रहा है. This is your, see, in modern physiology it is called as sickness behavior. Whenever there is some immune stimulus is given to your body, it induces sickness behavior. The sickness behavior में क्या क्या आता है? उसमें आता है fever आता है, उसमें social withdrawing आता है, उसमें उल्टी करने का मन भी आता है. So these are the part and parcel of infectious conditions also, as well as endogenous conditions. आपके अंदर कब बढ़ गया है? आपके अंदर रस की विकृति हो गई है. That's why कफ की वृद्धि का आप लोगों ने फर्स्ट ईयर BMS दोषों की वृद्धि का कॉन्सेप्ट समझा है. तो उसमें है कि बॉडी इवैक्यूएट करना चाहती है स्टमक. Relax. What your stomach contains? It contains the kapha. Which kapha type? There are 5 types of kapha. And this kapha in your intestine or in your stomach, it has got the function of kledan of body. What do you call it? You call it kledak kapha. So rullasa is a symptom, is the where body is trying to empty the stomach, and this is all about which kapha? It is kledak kapha. Kledak kapha is situated in your stomach. Pachak pitta is situated in your grihani, and apan vayu is situated in your pakvashay. And amashay, grihani, and pakvashay, these are the 3 places in context which our concept of vamana, virechana, and bhakti is there. So for all kapha disorders, may it be weight gain, may it be some kidney condition, may it be some skin disease, may it be anything, may it be even for buddhi, ashasta, swapna darshanam, these are the symptoms of kapha vruddhi or dosha vruddhi. In that we give woman. So for enhancing your nervous mechanism, not nervous mechanism, but cognition mechanism, what you are using the thing. Why you are using woman? By woman, you are bringing all the cuff at the place of kledak cuff. And kledak cuff se aap us cuff ko bahar nikal rahe ho. So the cuff that is in your saliva, the cuff that is in your tarpak cuff in your head, the cuff that is in your joints, shleshak cuff. Let me tell you what is joints. Cuff, we always say that shleshak cuff किधर है? संधि में है. But what is संधि? So संधि कहते हैं, हम लोग कहते हैं joints, और हम लोग गड़बड़ी कर देते हैं. हमको आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट, आयुर्वेद का टर्मिनोलॉजी आयुर्वेद के हिसाब से समझना पड़ेगा. एंड संधि शब्द जहां जहां पर आ गया, तो लेट मी टेल यू So this is really very unfortunate that our उसमें संधि कहते हैं, उसमें ब्रैकेट में आ जाता है joint, but that is not the case. संधि की हमारी बात चल रही थी. संधि is the thing where 2 or 3 different sharir bhava come together
देयर इज अ इंसर्शन. सो संधि का मतलब सिर्फ आपका नी जॉइंट या फिर आपका वो ह्यूमेरस का और इसका जॉइंट है, ऐसा बात नहीं है. संधि का मतलब है 2 या 3 शरीर भाव इकट्ठा आना. आपका नर्व जहां पे मसल में इन्वेड होता है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी संधि है. आपका वेस्कुलेचर जहां पे टिश्यू में एंड होता है वो वेस्कुलेचर का और टिश्यू का जंक्शन भी संधि है. संधि इज अ वेरी बिग थिंग. आप लोग टीचर बीएमएस वाले हो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन संधानीय गण, वो जो संधानीय गण है उसमें यष्टि मधु ऐसा द्रव्य है जिसका काम मन के ऊपर है, तो वो मन को भी सुदरिंग करेगा, मन का संधि करेगा. उसमें आपको चंदन या फिर उसमें रजनी वगैरह भी मिल जाती है जिसका काम वेस्कुलेचर पे कंपोनेंट उसका काम है. सो ऐसा नहीं है कि संधि का मतलब सिर्फ जॉइंट है, और जॉइंट में जो साइनोवियल फ्लूइड है वो जो भी आपके बुक्स में दिया है कि संधि जॉइंट एंड देन साइनोवियल फ्लूइड, आई एम सॉरी जेंटलमैन, इज इक्वल टू नहीं है. जब शब्द आएगा तो आपको आयुर्वेद के हिसाब से ऐसा करना पड़ेगा. वो तो नहीं देना है तो आपको आयुर्वेद के हिसाब से देखना पड़ेगा. छोड़ इन शब्दों को आप लोग एक आदत डाल लो कि आप लोग विलियम मोनियर डिक्शनरी से उसका मीनिंग हो, उसी इटिमोलॉजी के कहते हैं. तो विकिक्शनरी है, जैसे विकिपीडिया है वैसे विकिक्शनरी है. सो हर एक को विकी किया करो और उसमें आपको इटिमोलॉजी भी मिल जाएगी, तो उस शब्द का ओरिजिन आपको समझ में आ जाएगा. हम बात करें उल्लास की. उल्लास इज देयर for evacuating your body, for evacuating your cough from, for evacuating your cough from from evacuate your intestine, or not intestine but stomach, and that is all about the feeling of vomit, the amashay, that is clear the cough. Gauravam is heaviness in the body. Gauravam comes in Majjavriddhiya. So the audio is not there, sir. I think you have muted the audio. Mute yourself and you can continue, sir. So you have muted yourself. Just a minute. No, sir. Sir, you have it is muted, sir. I'm trying to unmute. Can you unmute from your like mobile? So we're not able to hear you. It is muted. Just a minute, sir. Sir, just a minute, sir. Just a minute.
Hello, 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 hello. नाही त्यांचं नाही त्याला फक्त सांगा थोड्या वेळाने करतो. हॅलो हॅलो Hello, sir. हॅलो So, sir, it is audible, sir. हॅलो हा is it audible? It is Yes, audible. sir. So all what we were talking about, yes, what we were talking about after Urallasa, that is vomiting, we were speaking about Gaurava. So Gaurava is feeling of heaviness. And it is there, I was talking that this Gaurava or feeling of heaviness is seen associated with two dhatus. One is Ras dhatu and one is Majja dhatu. Majja dhatu has what function of Purana, this to fill the dead space, to fill the evacuated space. जो अस्थि के अंदर का जो खोखलापन है उसको भरना मज्जा का काम है. सो ऑब्वियसली जिस चीज का काम डेड स्पेस को भरना है, ऐसी गुरु जो चीज है वो तो ऑब्वियसली उसका काम तो ये होगा ही कि गौरव. लेकिन इट इज इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड that Ras Dhatu has got function of the Ras Dhatu has got this Vikrut Lakshana of Gaurav. Why this is so? Because Ras Dhatu is there everywhere. Ras Dhatu का जो function है वो है प्रीणन करना सभी बॉडी का. सो बॉडी में हर जगह पे, हर लेवल पे, हर टिश्यूज तक रस धातु जा चुका है. एंड दैट इज वाई रस धातु के जो सिम्टम्स है वो ऑल बॉडी पे आ जाते हैं. दैट इज वाई ज्वर जिससे हमारा चिकित्सा स्थान शुरू होता है वो रस धातु का व्याधि है. सो दैट्स वाई ये जो गौरव का जो फीलिंग है, हेवीनेस है, ये अक्सर हम लोग को लगता है मेद से रिलेटेड है, माउस से रिलेटेड है या फिर मज्जा से रिलेटेड है. लेकिन हम ये चीज भूल जाते हैं कि गौरव और फीलिंग ऑफ हेवीनेस, बिकॉज द रस धातु इज सिचुएटेड एवरीवेयर, सो ऑब्वियसली ओवरऑल बॉडी में हेवीनेस फील होना, या फिर आगे जाके टर्म है अंगमर्द, ओवरऑल बॉडी में मसल में यूजुअली ये पेन होता है. लेकिन ये पेन को हमने माउस के साथ सिर्फ एसोसिएट नहीं करना है, हमने इस पेन को एसोसिएट करना है रस धातु के साथ, क्योंकि ये रस धातु पूरे शरीर में व्याप्त है. तो ये पूरे शरीर वाले सिम्टम्स आ गए गौरव और अंगमर्द. एंड यही रस धातु का ये जो विकृति है, ये रस धातु की और कफ की विकृति जब तंद्रांत तक जाएगी, जब ये इंद्रियों का पोषण करने वाला जो रस धातु है वहां तक जब ये विकृति पहुंचेगी तब सिम्टम उत्पन्न होगा तंद्रा. ज्वर इज अ डिफरेंट थिंग. ज्वर पे अगर बात करेंगे तो वो बात कहीं और चली जाएगी. लेकिन ज्वर रस धातु का ही विकृति है. तम यानी कि आंखों के सामने अंधेरा. पांडुत्व, पांडु इज अगेन आयुर्वेद का एक कॉन्सेप्ट है जहां पे बहुत सारी कंडीशंस कवर्ड है. पांडु यानी सिर्फ एनीमिया नहीं है, पांडु में कुछ हार्ट की कंडीशंस आती है, कुछ किडनी की कंडीशंस आती है जहां पे इंफ्लेमेटरी प्रेजेंटेशन होता है और पांडु में एनीमिया भी आ जाता है. सो ये सब कुछ बहुत बड़ा जो डिसीजेस का कॉम्प्लेक्स है जिसे हम लोग आयुर्वेद में पांडु कहते हैं, वो रस धातु की विकृति के कारण है. क्योंकि यही रस धातु आगे जाकर हृदय में या फिर हृदय में वो स्थित होता है और हृदय से ही पांडु की विकृति कही गई है. पांडुत्वम स्रोत समृद्धः. दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग.
Srutasam rodha comes as a vikriti of rasdhatu. Try to understand, my dear students. This is very important. स्रोतसों का अवरोध होना, अब किस स्रोतस का ये नहीं कहा, उन्होंने जनरल कह दिया कि कोई भी स्रोतस हो, किधर भी हो, किधर भी ब्लॉकेज आ गया, किधर भी स्रोतस ऑक्लूड हो गया, किधर भी स्रोतस में अंदर कुछ तो वो जो ल्यूमेन है, अंदर का जो डेड स्पेस है, वो स्रोतस का अवरोध हो गया, तो उसको रस प्रदोषज मानना चाहिए। ये कितना इंपॉर्टेंट है, समझिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद डिसीजेस भले ही अनगिनत होंगे, लेकिन पैथोजेनेसिस के जो टाइप्स है वो सिर्फ 5 कहे गए हैं। वो क्या है? स्रोतस में अति प्रवृत्ति होना, डायरिया हो रहा है तो उस स्रोतस में से मल ज्यादा बाहर निकल रहा है, ये हो गया अति प्रवृत्ति। फिर है संग, यानी कि जो स्रोतस से बाहर निकलना चाहिए मल वो बाहर नहीं निकल रहा है, ये एक हो गया। फिर एक है सिराणाम ग्रंथि, यानी कि सिराओं में, यानी कि बॉडी के चैनल्स में कुछ ग्रंथि यानी कि ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर निर्माण हो जाना। एंड आगे के 2 फिर है वो अलग बात है, उनमें नहीं जाते हैं। लेकिन इस तरीके से आयुर्वेद में डिसीजेस भले ही अनगिनत है, क्योंकि देखिए अभी आप आयुर्वेद में आए हो तो आपको हर कोई पूछेगा, अरे तुम्हारे आयुर्वेद में कोविड है क्या, तुम्हारे आयुर्वेद में कैंसर है क्या, तुम्हारे आयुर्वेद में ये हार्ट ब्लॉक होता है, तो ये हार्ट का ब्लॉक है ना, 80% ब्लॉक है, 90% ब्लॉक है, तो ये क्या तुम्हारे आयुर्वेद में बताया गया है ये ब्लॉक होता है? आपको पेशेंट पूछेगा कि डेविएटेड नेजल सेप्टम है, नाक के अंदर जो कार्टिलेज है वो बड़ी है, और हमको ईएनटी सर्जन ने बोला है कि इसका सर्जरी करना पड़ेगा, तो क्या आपके आयुर्वेद में ऐसा कुछ आया है कि डेविएटेड नेजल सेप्टम है होता है और नाक के अंदर हड्डी बढ़ के आपको सर्जरी होती है? या फिर जो आपका सर्वाइकल कैनल है उसमें कुछ विकृति है, कोई भी बॉडी का चैनल ऑक्लूड हो रहा है, वहां पे ऑब्स्ट्रक्टिव फेनोमेनॉन हो रहा है, तो उस ऑब्स्ट्रक्टिव फेनोमेनॉन को आयुर्वेद ने भले ही वहां पर ट्यूमर करके बताया होगा, नहीं बताया होगा, भले ही आयुर्वेद ने वहां पर वो जो नाक के अंदर हड्डी बड़ी है, सो नाक के अंदर का भी कार्टिलेज बढ़ जाता है, इस परिभाषा में बताया होगा या फिर नहीं बताया होगा, लेकिन आयुर्वेद ने स्रोतसों का अवरोध होता है यह फेनोमेनॉन जरूर बताया है, और उस अवरोध के लिए उस स्रोतस के हिसाब से अलग अलग औषधियां बताई है। और यहाँ पे हम लोग माय डियर स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं रस धातु प्रदोषज विकारों की, और रस धातु प्रदोषज विकारों में आचार्य कहते हैं कि स्रोतसाम रोधा, भले ही कोई भी स्रोतस में, किसी भी स्रोतस में अवरोध हो, उसको आपने समझना है कि कौन से भी स्रोतस का अवरोध हो वो स्रोतसाम रोधा है। तो ये स्रोतसाम रोधा जो रस धातु के अंडर आया है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि आपके नाक के अंडर की हड्डी बड़ी या फिर आपके बॉडी के किसी भी चैनल में, किसी भी बॉडी के डक्ट में कुछ ओवरग्रोथ होके वहां पे स्रोतस का अवरोध आ गया है, तो ये सभी स्रोतसों का अवरोध रस धातु प्रदोषज मानना चाहिए। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आहार का परिणमन होने के बाद जो आहार रस बनेगा वही आहार रस को हर जगह पे पहुंचा देना ताकि प्रीणन हो सके, ये रस धातु का काम है। दैट्स वाई रस धातु के विकारों की जब बात जाती है तो कुछ कुछ चीजें हमें सिस्टेमिक मिलती है, तो ये चीज सिस्टेमिक हो गई कि स्रोतसाम रोधा, बॉडी के चैनल में कहीं पर भी कुछ भी अवरोध हो। एंड दैट्स वाई देखिएगा रस धातु की निरुक्ति क्या है, रस धातु का जब उनको जब नाम रखना था तो उन्होंने क्या कहा, तत्र अरह गच्छति इत्यतो रसः, the one that is continuously moving, that is moving for 365 days, that is moving for 24/7, the one that is continuously moving। देखिए निरुक्ति क्या होती है, देखिए मैं कौन हूं, मैं डॉक्टर प्रसाद पांडकर हूं, कोई मुझे पूछेगा रेलवे स्टेशन पे, एयर फ्लाइट में कि आप क्या करते हो, इन अ सिंगल लाइन आई विल से आई एम आयुर्वेदिक डॉक्टर। फिर हमारी 15 मिनट आगे बात बढ़ेगी तो आई विल से कि यस आई प्रैक्टिस आयुर्वेद एज वेल एज आई एम एसोसिएट प्रोफेसर। फिर आगे जाके तो हम बात करेंगे हाँ यस मैं थोड़ा बहुत ये भी कर लेता हूँ, क्रिकेट भी खेल लेता हूँ वगैरह वगैरह।
लेकिन आपका जो नामकरण होता है, आपकी जो आइडेंटिटी होती है, वो आपके सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन से होती है. सो दिस इज रियली ब्यूटीफुल. रस धातु एक ऐसा धातु है जिसका काम है सभी धातुओं का प्रीणन करना, सभी धातुओं का पोषण करना इस रस धातु का काम है. लेकिन जब इसका नामकरण करने की, जब उसका नेम सेरेमनी करने की बात आ गई, तो उन्होंने प्रीणन जैसा इंपॉर्टेंट कर्म को भी साइड में रख दिया और आचार्यों ने इसे नाम दे दिया रस. और इस रस शब्द की यहाँ पर निरुक्ति है इस कंटेक्स्ट में. रसो वैसा वगैरह बाकी भी निरुक्ति है, उसमें हमें नहीं जाना है. यहाँ पे निरुक्ति है द वन दैट इज मूविंग तत्र गच्छति इत्यतो रसः. ये मैं अचानक से निरुक्ति में क्यों चला गया? क्योंकि हम यहाँ पे रस धातु का आश्रयश्री भाव समझ रहे हैं कप दोष के साथ, और हमारे यहाँ पे बात चल रही है रस धातु की विकृति के लक्षण. चरक सूत्र स्थान 28 में से हम लोग देख रहे हैं, उसमें आ जाता है स्रोत सामरोधा. और हम यहाँ पे समझने का प्रयास कर रहे हैं कि स्रोत सामरोधा यहाँ पे कह दिया, न सिर्फ रस वह स्रोतस, लेकिन रक्त वह में, मांस वह में, मेदो वह में, किधर भी बॉडी में स्रोतस का ऑक्लूजन हो गया, तो इसको आपने समझना चाहिए. किसके साथ? इसको आपने रस की विकृति समझनी चाहिए, क्योंकि ये रस धातु हर जगह पे है. ये रस धातु का काम प्रीणन का, ये हर जगह पे जाके अपनी अपनी रसायनियों को जाके, वहां तक की रस व धमनियों को जाके इन्वेड नहीं करेगा, तब तक ये नहीं कर पाएगा. दैट्स वाई अंगमर्द जैसा लक्षण, दैट्स वाई गौरव जैसा लक्षण, और दैट्स वाई स्रोत सामरोधा जैसा लक्षण जो कि सार्वदेहिक है, ये रस का है. और रस की निरुक्ति है द वन दैट कंटिन्यूअसली मूव्स. मतलब कि जब हम रस की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग सिर्फ प्रीणन की ओर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं. रस धातु आंखों के सामने आते ही हमारा कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है कि यस, रस धातु यानी कि कुछ तो सौम्य है, शीत है. वैसे वो शीत भी नहीं है. पित्त के स्थानों में रस आ जाता है. पित्तम के स्थान क्या है? नाभि आमाशय स्वेदोलसिका रुधिर में रसा. लेकिन एक हमारा वो एक माइंडसेट हो जाता है कि रस धातु कहते ही हम लोग को वो शीत लगता है, सौम्य लगता है, क्योंकि उसका प्रीणन कर्म है. लेकिन रस धातु कहते ही द वन विच इज कंटिन्यूअसली मूविंग, और ये मूविंग करने वाला फोर्स व्यान वायु का है. और ये व्यान वायु का फोर्स यानी कि सिर्फ आपका कार्डियक आउटपुट नहीं है जेंटलमैन. इसको हमने मॉडर्न के साथ कोरिलेट करने के चक्कर में हमारे आंखों के सामने व्यान वायु कहते हैं, कार्डियक आउटपुट सिर्फ आ जाता है. बात ऐसी नहीं है. रस धातु हृदय में स्थित है, एंड जैसे इसका एसोसिएशन कफ के साथ है, वैसा इसका साधक पित्त के साथ भी एसोसिएशन है. और द वन विच कंटिन्यूअसली मूव्स तत्र गच्छति इत्यतो रसः. ये गच्छति होगा व्यान वायु से, क्योंकि व्यान ही पूरी बॉडी का मूवमेंट करने वाला है. और इस व्यान की गति में जो अवरोध आएगा, वो अवरोध रस धातु की विकृति के कारण है. ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है हमारे रस धातु का. और इस हिसाब से हर जगह पे बॉडी में किसी भी चैनल में अगर विकृति आ गई, तो वो विकृति स्थिर गुण से आएगी. वो विकृति वहां पे कुछ तो स्निग्ध और स्थिर गुण चिपकेगा. ये चिपकेगा किसी भी बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर. यस, इसमें स्थिरत्व ज्यादा होगा तो आप उसे कहेंगे कि नाक के अंदर हड्डी बढ़ गई है. इसमें चिपचिपापन ज्यादा होगा तो आप कहेंगे कि यस, ये कोरोनरी के अंदर कुछ तो आपका एडिपोस टिश्यू का स्ट्रक्चर है, तो हार्ट के ब्लॉकेजेस की बात है. लेकिन आफ्टर ऑल ये ब्लॉकेज करने वाला कफ है, और ये ब्लॉकेज करने वाले कफ को यहाँ पे बॉडी में हर स्रोतस का ब्लॉकेज करने का जो फेनोमेनन है, उसको जोड़ दिया गया है रस धातु के साथ. क्लेबियम इस इरेक्शन का जो फेनोमेनन है, वो सिर्फ शुक्र से रिलेटेड नहीं है. शुक्र का मन के साथ संबंध है, और इसलिए कि रसवाहनम फ्रुत्सम हृदय मूलम है, और हृदय में ही मन स्थित है. तो यहाँ पे ये क्लेबियम भी रस प्रदोष आ गया. एंड कृषांगता, दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग. कृषांगता इज रस प्रदोष. सभी धातुओं की क्षय और वृद्धि दो उसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है. एक तो आचार्य सुश्रुत कहते हैं तेषाम धातुनाम क्षय वृद्धि शोणित निमित्त, तो उसका कारण शोणित है यानी कि रक्त है. उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि अग्नि जब तक की काम नहीं करेगा. अभी ऑलमोस्ट मेरा टाइम होने को है. सभी दोष और सभी धातुओं का आश्रय रिलेशनशिप बोलना उसमें इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल करके बोल रहा हूँ. आगे जाके हम जब अग्नि और पित्त और रक्त का साहचर्य देखेंगे, तो अग्नि ये शक्ति है जो कि पित्त नाम के दोष में आश्रित है, और ये पित्त नाम का दोष भी दोष है. और दोषों को रहने के लिए एबोर्ड की जरूरत होती है, आश्रय की जरूरत होती है. वो आश्रय क्या है? वो आश्रय स्वेद है और रक्त है. सो इस हिसाब से जब रक्त धातु ये शब्द फर्स्ट ईयर बीएमएस स्टूडेंट के सामने आएगा, तो उसके आंखों के सामने डब्ल्यूबीसी, आरबीसी ये सब कुछ नहीं आना चाहिए.
WBC, RBC, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ रक्त। लेकिन रक्त कहते ही हमारी आंखों के सामने आ जाना चाहिए, रक्त इज वन जो कि तेज डोमिनेंट पित्त नाम के दोष का आश्रय देने वाला धातु। एंड ये चीज जब हम लोग समझेंगे तब हमको समझ में आ जाएगा कि आचार्य सुश्रुत ऐसा क्यों कहते हैं, तेषाम धातु नाम क्षय वृद्धि शोणित निमित्ते। सभी धातुओं का या तो क्षय होगा या तो वृद्धि होगी। ये डिपेंड करने वाला है किस चीज पे, ये डिपेंड करने वाला है शोणित पे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि, इसका मतलब कि अगर कोई मॉडर्न का चश्मा लगा के आयुर्वेद को पढ़ने वाले लोग होंगे, वो इसका मतलब ये नहीं निकालेंगे कि देखो भाई हमारे आचार्यों को पता था कि ब्लड में ही न्यूट्रिशन होता है, ब्लड में ही गैसेस होते हैं, ब्लड में ही हार्मोन्स होते हैं। तो ये कैरी करने वाला ब्लड वहां तक जब तक कि नहीं पहुंचेगा, वहां पे टिश्यू का ग्रोथ पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा कोई आयुर्वेद का मॉडर्न का चश्मा लगा के देखने वाले लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन तेषाम धातु नाम क्षय वृद्धि शोणित निमित्ते का मतलब है कि सभी धातुओं का क्षय आपको करना है या फिर आपको वृद्धि करनी है, आपको रक्त से ही जाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको अग्नि से जाना पड़ेगा, आपको धात्वग्नियों पे काम करना पड़ेगा, भूताग्नियों पे काम करना पड़ेगा, जो अल्टीमेटली जाठराग्नि पे डिपेंड करते हैं, और जाठराग्नि अल्टीमेटली पित्त पे डिपेंड करता है। और पित्त को आश्रय देने वाला वहां पे धातुओं में जो है वो एकमात्र धातु है, वो रक्त धातु है। सो रक्त धातु कहते ही आयुर्वेद के स्टूडेंट की आंखों के सामने मेटाबॉलिज्म आना चाहिए, कॉग्निशन आना चाहिए। चरक सूत्र स्थान 24, you will move to second year. In your second year, you will learn चरक संहिता। चरक सूत्र स्थान 24 में विधिष्ठोण अध्याय है। इट इज इंटरेस्टिंग, चरकाचार्य ने सूत्र स्थान में एक धातु के लिए अगर कोई अध्याय स्पेंड किया है तो वह रक्त धातु है। इस हिसाब से हमने रक्त और पित्त के आश्रय से रिलेशनशिप को देखना है। और उसी चैप्टर में वहां पे आ जाता है, कौन सा चैप्टर, तो वो आता है संन्यास, मद मूर्छा संन्यास। उसी कॉन्टेक्स्ट में रक्त धातु का पूरा वर्णन होने के बाद आचार्य चरक कहते हैं कि दोष जब रसव स्रोतस पे जाएंगे तो मद होगा। मद यानी कि जो बैड हैबिट्स वाले लोग होते हैं उनको स्मोक करने के बाद या अल्कोहल लेने के बाद वो जो फील आता है वो मद होता है। मूर्छा यानी कि चक्कर आके कोई गिर गया वो मूर्छा हो गया। और संन्यास यानी कि पूरा वो कोमा में चला गया। ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट एक्चुअली नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कंपोनेंट है, ये कॉग्निशन से रिलेटेड कंपोनेंट है। लेकिन आचार्य चरक अगर उसको रक्त के अंदर ले रहे हैं तो हमने आचार्य चरक को ये नहीं पूछना है कि ये तो नर्वस सिस्टम का था, आचार्य चरक जी आपने इसको इसमें रक्त धातु के टाइम पे कैसे क्या ले लिया, रक्त धातु तो ब्लड होता है। हमने ये चरकाचार्य जी को नहीं पूछना है, उल्टा हमने खुद में सुधार करना है। और हमने ये नर्वस सिस्टम यानी मज्जा और रक्त यानी ब्लड ये दिमाग से निकाल लेना है। और कल को रक्त धातु ये शब्द सुनते ही आयुर्वेद के स्टूडेंट की आंखों के सामने कुछ अगर आ जाना चाहिए तो आ जाना चाहिए। तेज महाभूत, धात्वग्नि, भूताग्नि, उन सभी जिस पे डिपेंड करते हैं वो पित्त का आश्रय जो कि रक्त है, यानी कि रक्त एक आग्नेय है। और ये आग्नेय भाव शारीर दोषों का पचन करके एक्चुअली बॉडी टिश्यूज को बनाना, ये काम करेंगे ये भूताग्नि धात्वग्नि। और मेधाग्नि, जो मेधाग्नि है कॉग्निशन का काम है, ये इंद्रियों के लेवल का जो काम है वो मज्जा में चल रहा है। इस हिसाब से हमारी नर्वस सिस्टम की कॉन्सेप्ट में मज्जा को छोड़िए आधा तो रक्त ही आ जाता है, शगात में विरेचन करने वाले लोग हैं। सो इस हिसाब से हमने बातों बातों में रक्त और पित्त इस आश्रय से रिलेशनशिप में भी कमेंट किया। हम शुरू हो गए थे कृशांगता से। सो हमारी बात ये चल रही थी कृशांगता की। सो पृष्ठ होना, बॉडी में पृष्ठ होना या फिर ओवर ओबेस होना, ये चीजें किन दो धातुओं से रिलेटेड है। एक मैंने कहा तेषाम धातु नाम क्षय वृद्धि शोणित निमित्त है, और उसी से बातें करते हमने रक्त और पित्त के आश्रय से रिलेशनशिप भी कमेंट किया। यहाँ पे बात है कृशांगता रस प्रदोष है तो स्थौल्य कार्श्यम रस निमित्तमेव। दिस इज अगेन वर्स फ्रॉम सुश्रुत संहिता। इस मेड भी स्थौल्य, मेड भी कार्श्य, ये दोनों रस धातु से रिलेटेड है क्योंकि ये पहला धातु है। सो पोषण अगर ढंग से नहीं हो रहा है, मांस उपचित ढंग से नहीं है, मेद उपचित ढंग से नहीं है, तो उसे वे प्रोटीन वगैरह वगैरह वो लोग भी खिलाने वाले हैं। और आप लोग भी अगर उसको कुछ मांस रस खिलाने वाले हो तो वो बात पक्का नहीं बनेगी। हमें समझना होगा कि ये कृशांगता जो है वो रस प्रदोषज है। फिर अगेन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, नाशो अग्नि है, अग्नि का नाश होना रसो प्रदोषज है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ब्यूटीफुल। अग्नि का नाश हो जाना रसो प्रदोषज है। व्हाट डज दिस इंडिकेट?
देखिए आपको फर्स्ट ईयर में इतना पढ़ाया गया है कि अग्नि 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 इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे जाके आप जैसे ही संहिताओं का अध्ययन करोगे तब आपको पता चलेगा कि अग्नि इज नॉट समथिंग कि किसी का अग्नि कम है तो चलो उसको सूंठ का चूर्ण दे देते हैं, सामान से सामान बढ़ेगा। वैसे भी हम लोग सामान्य विशेष सिद्धांत फर्स्ट ईयर शरीर क्रिया में पढ़ते हैं, लेकिन ये सामान्य विशेष सिद्धांत का मतलब ये नहीं है कि चलो अब मेरे को मेरा अग्नि अच्छा है करना है तो मैं एक काम करता हूँ सुबह शाम 15-15 ग्राम सूंठ का चूर्ण खा लेता हूँ। इससे क्या होगा? इससे ड्यूडेनल अल्सर होगा, इससे स्टमक में अल्सर होगा, इससे अग्नि नहीं बढ़ेगा। अग्नि इज अ शक्ति, एंड ये अग्नि नाम की जो शक्ति होती है आप आगे जाके पढ़ोगे कि घृत ही अग्नि को दीपन करने के लिए सबसे अच्छी प्रिपरेटरी जो कल्पना है वो चिकित्सा में आप लोग आगे जाके पढ़ोगे वो घृत ही है। सो घृत को छोड़िए, मेडिसिन पार्ट को छोड़िए, आप लोग फर्स्ट ईयर बीएमएस हो, आप सिर्फ इतना समझ लो कि घृत में जो गुण है यानी कि जो स्निग्ध गुण है, शरीर का स्निग्ध गुण, अग्नि का मतलब ये नहीं है कि आपने सुंठ का चूर्ण खा गया तो आपका अग्नि बढ़ गया, बल्कि आपकी अग्नि नाम की जो शक्ति है वो धातुओं पे डिपेंड करती है, वो स्निग्ध गुण पे डिपेंड करती है, वो आपके मेद पे डिपेंड करती है। मेद धातु जो है, आप लोगों ने मेद धातु पढ़ा, मेद धातु का स्रोत आपने क्या पढ़ा कि मेदोहानम श्रुतसम वृक्कोमूलम वपावहनम च। व्हाट इज वृक्क? वृक्क को आप किडनी कह सकते हो। पैराकोलिक गटर में पेरिटोनियम के पीछे वृक्क रखा है और आगे क्या रखा है? आगे रखा है वपावहन, वपा उदरस्था तैलवर्तिका इति, वपा यानी कि मेसेंट्रिक मोमेंटम। ये मेदोह श्रुतस ऐसा इधर क्यों है? ये मेदोह श्रुतस यानी कि आयुर्वेदिक ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एब्डोमेन है। ये आयुर्वेदिक ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एब्डोमेन अगर आप लोग ले लोगे तो आपको आगे दिखेगा मेद का स्नेहन, मेद का पूरा, जिसे आयुर्वेद में वपावहन कहा है और मॉडर्न में मेसेंट्रिक मोमेंटम कहा है, ये पूरा फैट जो कि इंटेस्टाइन के आसपास है, और पीछे आपको मिलेगा वृक्क, एंड इन दोनों के बीच में अगर क्या है तो इन दोनों के बीच में आपका अग्नि है। सो आपके अग्नि को प्रॉपरली काम करने के लिए जरूरत होती है स्नेह की, और ये स्नेह धातु से तर्पण शरीर का होगा तभी जाके अग्नि बढ़ेगा, और ये रस धातु अगर विकृत हो गया तो वो अग्नि का नाश कर सकता है। एंड देन आगे के लक्षण है, आगे के लक्षण है कि आगे के लक्षण है कि वलयः पलितानि च। सो वलयः पलितानि यानी कि वलित और पलित यानी कि स्किन पे रिंकल्स आ जाना चेहरे पे और बालों का पकना, ये रसप्रदोष माना है क्योंकि ये एजिंग के सिम्टम्स है। और आप लोग अगर अभी आप लोग इम्यूनिटी और ये सब कुछ अगर आप लोग गूगल करते हो तो आयुर्वेद में जो रसायन मेडिसिन है जिसको मॉडर्न वाले इम्यूनोमोडुलेटर काइंड ऑफ एक्शन कहते हैं, तो ये एजिंग एंटी एजिंग फेनोमेनॉन जो आयुर्वेद में के मेडिसिन का है वो रसायन का है। तो रसायन मेडिसिन का मतलब ही ये है कि रस प्लस आयन, जो मेडिसिन रसम के आयन में घुस के काम करते हैं, रस धातु को क्लीन करके काम करते हैं, और एक बार पहला धातु ही क्लीन हो गया तो आगे धातुओं का पोषण हो सकेगा। तो यहाँ पे हमने देखे रस प्रदोषित लक्षण कौन कौन से है और वहां पे कफ का संबंध कैसे कैसे आ गया। हमने देखा पहली जो लाइन थी अश्रद्धा, अरुचि, अस्य वैरस्य, अरसज्ञता, इनका डायरेक्ट संबंध बोधक कफ से है। फिर हमने देखा रुल्लास यानी कि जीव मचलना, बॉडी इज ट्राइंग टू एम्प्टी योर आमाशय, सो आमाशय में है क्लेदक कफ। फिर हमने देखा गौरव, अंगमर्द, ये दो जो चीजें हैं ये बॉडी का हेवीनेस दिखा रही है, ये ओवरऑल बॉडी के सिम्टम्स है क्योंकि रस धातु का स्रोत हर जगह पे है, क्योंकि वो हर जगह पे जाके प्रेरण करने का काम कर रहा है। तंद्रा और तम दिखाते हैं कि यहाँ पे कॉग्निशन की जो लेवल है, इंद्रियों की जो लेवल है, वहां पे जो रसवाहिनी पोषण करने वाले एंडिंग्स है वहां जाके रस की विकृतियां दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे तर्पक कफ की बात आ गई। आपको तर्पक कफ आपने पढ़ा है, तर्पक कफ कहाँ पे है? सिर में है और आंखों में है। सो यानी कि ऑब्वियसली इसका संबंध मज्जा से है। हमने ये भी देखा कि क्लेदक कफ आमाशय में है, और यही क्लेदक कफ और ये आमाशय जो प्लेस है यही हमारा वे ऑफ एक्शन है कि हम पंचकर्म वमन को समझ सकते हैं। बॉडी में किधर भी कफ विकृति बढ़ा हुआ हो, लेकिन हम लोग के ट्रीटमेंट में वमन नहीं आता है। बॉडी में किधर भी पित्त पड़ा हो, हमारे ट्रीटमेंट में विरेचन नहीं आता है, क्योंकि हम लोग ये इसको आमाशयस्थ क्लेदक कफ में इसको लाके इकट्ठा करते हैं और वहां से बाहर निकालते हैं। कफ के बाकी के दो टाइप्स कौन से बचे? एक बचा श्लेषक कफ, जो कि मैंने बातों बातों में अभी 5 मिनट पहले मैं कह रहा था, श्लेषक कफ संधियों में होता है। तो संधि यानी कि साइनोवियल फ्लूइड, संधि यानी कि ज्वाइंट, ये दिमाग से निकाल लो।
संधि यानी कि संधि मर्म नाम का एक अलग से मर्मों का टाइप आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने एनाटॉमी में अगर डेड बॉडी का डिसेक्शन करते करते थोड़ा बहुत समय बचा होगा तो आपने आयुर्वेद का शरीर अगर पढ़ा होगा तो उसमें आपको ये मिला होगा कि संधि मर्म नाम की एक अलग से एंटिटी है और वहां पे संधि शब्द का मतलब कहा गया है जहां पे 2-3 शरीर भाव इकट्ठा आते हैं। सो वेसल जहां पे एंड होती है मसल में, नर्व जहां पे एंड होती है मसल में, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो, ऐसे बॉडी के बहुत सारे जंक्शंस है जिनको आप संधि इस शब्द में समझ सकते हो। तो वो संधियों में जो कफ है वो कफ हो गया। सो इस हिसाब से हमने कफ के टाइप्स पढ़े एंड ये सभी सिम्टम्स किस तरीके से रस धातु में आ जाते हैं ये पढ़े। और हमने ये भी देखा हमने हेमाद्रि का टीका देखा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। आश्रय आश्रय भाव हम लोग क्रिया में पढ़ लेते हैं कि यस वायु किधर है, वायु अस्थि में है। हमने एक्चुअली रस और कफ की थोड़ी बहुत बात की, हमने पित्त और रक्त की भी जाते जाते बात की। बस मैंने इस पे कमेंट नहीं किया, वो करता हूँ और फिर हम लोग थोड़ा सा रुकने का प्रयास करते रुकने की ओर जाएंगे। मैं एक कमेंट करता हूँ, वात और अस्थि की रिलेशनशिप ये अलग है। पित्त बढ़ेगा तो स्वेद बढ़ेगा या फिर रक्त बढ़ेगा, या फिर स्वेद और रक्त बढ़ेंगे तो उसकी विकृति आपको पित्त में भी रिफ्लेक्ट होगी, ये हमने देखा। वैसे हमने रस का भी देखा, लेकिन वायु में कहते हैं कि ये चीज अलग है। वायु में है कि वायु बढ़ेगा तो अस्थि कम होगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अगर शरीर क्रिया की बुक पढ़ी होगी तो उसमें वो टिपिकल वो फीमर का क्रॉस सेक्शन दिखाते हैं कि वो बोन है, ये फीमर का क्रॉस सेक्शन है और उस फीमर के अंदर एक तो वो हड्डी है ऑस्टियोसाइट्स और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है बोन मैरो, दैट इज मज्जा। तो फिर वायु अगर कम होगा तो ऑब्वियसली मज्जा बढ़ी हुई होगी, अस्थि बढ़ा हुआ होगा, या फिर अस्थि अगर कम पड़ गया, मज्जा अगर कम पड़ गई तो वहां पे वायु आपको, धातु अगर कम हो गया तो वायु आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। ये जो ट्रांसफर सेक्शन वहां पे फीवर का दिखाते हैं, ये ट्रांसफर सेक्शन और ये जो फिगर्स है, ये फिगर्स बहुत हमारा कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करती है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी टॉपिक को समझाने के बजाय ये कॉन्सेप्ट हमको उल्टा करने में ये ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम अस्थि को हड्डी से यहाँ पे इक्वेट कर देते हैं। ऐसा नहीं है जेंटलमैन, आयुर्वेद की अस्थि की कॉन्सेप्ट हड्डी नहीं है। अस्थि क्या है? अस्थि का कर्म है धारण। धारण शब्द का मतलब है कि चीजों को पकड़ के रखना, और ये जो चीजों को पकड़ के रखने का काम है ये काम अस्थि का है। सो अस्थि कहते ही हम लोग अस्थि यानी कि हड्डी हम लोग शुरू हो जाते हैं, और अस्थि यानी कि हड्डी ये एक बार शुरू हो गए हम लोग तो अस्थि का वायु का आश्रय से रिलेशनशिप हमको दिखाना है। तो हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम किसी हड्डी का ट्रांसफर सेक्शन बनाएंगे और फिर उस हड्डी में हम लोग दिखाएंगे कि भाई अंदर देखो मज्जा है तो ये वायु बढ़ गया तो और अस्थि और मज्जा कम हो गए, या फिर अस्थि और मज्जा अगर बढ़ेंगे तो वायु कम हो जाएगा। ये ट्रांसफर सेक्शन जो हमारे जो पिक्स है हमारे बुक्स में, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम करा देते हैं। यस इट इज दैट, इट इज दैट। मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूं कि अस्थि के अंदर वायु है तो क्या वो उस ट्रांसफर सेक्शन जो हड्डी दिखाई है उसके अंदर वायु नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, वो तो कॉन्सेप्ट है ही। लेकिन हम इन चीजों को रिड्यूस करा रहे हैं। आप समझिए, आप समझिए, ये आई एम स्पीकिंग फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। हम लोग चीजों को रिड्यूस करा रहे हैं। हम लोग अस्थि यानी कि हड्डी, ये हम लोग मतलब कि हम लोग अस्थि ने एक्चुअली हमारे ऊपर डिफेमेशन का केस ठोकना चाहिए कि यस ये आयुर्वेद की ये जो बुक्स है बीएमएस के, इसमें भाई अस्थि मैं हूं, मैं अस्थि हूं। अस्थि ने एक्चुअली हाईकोर्ट में चले जाना चाहिए कि मैं तो अस्थि हूं, और ये देखो बुक्स ये तो मेरे को बोन कह रहे हैं, लेकिन मैं बोन छोड़ के भी बाकी भी बहुत कुछ हूं, तो ये लोग मेरी इज्जत का हनन कर रहे हैं। सो ये करके अस्थि ने एक्चुअली हाईकोर्ट में चले जाना चाहिए। बड़ी अस्थि, अस्थि धारण करने की बॉडी की क्षमता है। अस्थि, अस्थि शरीर में पृथ्वी तत्व का उत्कर्ष जहां पे है, पंचमहाभूतों का जो हमारा लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है उसमें, पंचमहाभूतों का जो हमारा लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है उसमें जहां पे पृथ्वी तत्व है, और पृथ्वी के भी गुणों में पर्टिकुलरली जो स्थिर गुण है, ये स्थिर गुण का जो मैनिफेस्टेशन है शरीर के अंदर वो अस्थि है। अस्थि क्या है? अस्थि शरीर की धारण की क्षमता है। धारण कहां कहां पर हो रहा है? धारण हो रहा है आपके स्टमक में। आपने फिजियोलॉजी पढ़ी, आपको ये पढ़ाया गया कि आपका जो गैस्ट्रिक स्फिंक्टर है वो आप जैसे ही खाना खाते हो वो 60 मिनट्स के लिए क्लोज हो जाता है ताकि गैस्ट्रिक जूस के साथ उसका इंटरेक्शन ढंग से हो।
एंड देन वो जो गैस्ट्रिक, वो जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है, वहां के मसल्स का जो स्पाज्म है वो खुलता है, एंड देन आगे अन्न आगे जाएगा डिओडिनम में। अस्थि कहां पर है? अस्थि शरीर की धारण करने की क्षमता है। किसी भी शरीर के भाव पदार्थ को उस बॉडी के चैनल में, स्रोतस में, विशिष्ट काल को पकड़ के रखना। आपका गर्भ है, वो गर्भाशय में 9 महीने अटका है। गर्भाशय की एबिलिटी है कि वो वहां पर, गर्भाशय की एबिलिटी है कि वो गर्भ को 9 महीने पकड़ के रख रहा है। आपके एल्वियोलस की एक कैपेसिटी है कि वो जो आपका रेस्पिरेटरी साइकिल है, एक रेस्पिरेटरी साइकिल आपका 3 या 4 मिनट के लिए चलेगा। सो वो 3 या 4 मिनट तक चले, एंड उस एयर में से एल्वियोलस, वो जो ऑक्सीजन गैसियस एक्सचेंज है वो हो, उसके लिए वो एल्वियोलाई उस बबल्ड स्टेज में रखना, ये एल्वियोलाई के अंदर की धारण की क्षमता है। ये गर्भाशय के अंदर की धारण की क्षमता है। इस धारण की क्षमता को जब हम समझेंगे, तब हमको पता चलेगा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वायु एंड अस्थि। सो वायु एंड अस्थि का जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ इतना सीमित नहीं है, ये इतना सीमित नहीं है कि हड्डी है और हड्डी अंदर से खोखली होती है, तो खोखली है तो वहां पे तो वायु और आकाश महाभूत होगा ही होगा, चलो हो गया। जहां पे वायु और आकाश महाभूत है, डेड स्पेस है, वहां पे वात दोष है, और ये जो हड्डी है ये अस्थि है, हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। यू नीड टू इंटरप्रेट इट एट फंक्शनल लेवल, एंड फंक्शनल लेवल पे चीज को आप जब समझने का प्रयास करोगे तो आप ये समझोगे कि अस्थि का कर्म है धारण, एंड वायु का कर्म है प्रेरण, और यहाँ पे जो शरीर भाव है वो शरीर भाव है कि स्थिर वर्सेस चल। सो अस्थि यानी कि सिर्फ ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोफाइट, ऑस्टियोक्लास्ट और हड्डी, ऐसा प्लीज दिमाग से मत निकाल दीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जब भी कोई भी शब्द अस्थि, अस्थि क्या है, अस्थि, जाइए लाइब्रेरी में, विलियम मोनियर खोलिए, जाइए गूगल पे, अस्थि शब्द की इटिमोलॉजी निकालिए, अस्थि शब्द के फंक्शन समझिए। वन लाइन, एक लाइन में अपने यूजी टीचिंग में मैं बार बार कहता हूँ, इनफैक्ट मैं अपने यूजी स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि मैंने आपको एक लाइन बस लिख के दी, तो इसके आगे मेरे लेक्चर में नोटबुक लाके आने का काम ही नहीं है। और वो लाइन में बस उनको सिर्फ इतना लिख के देता हूँ कि कॉन्सेप्ट ऑफ दोष धातुमल इज लेस स्ट्रक्चरल मोर फंक्शनल। कॉन्सेप्ट ऑफ दोष धातुमल इज लेस स्ट्रक्चरल मोर फंक्शनल। ये बस आप एक, ये आप स्टूडेंट हो ना, तो आप इसको नोटबुक में मत लिखिए। मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ, एक कार्डबोर्ड लेके आइए स्टेशनरी से, और इसको स्केच पेन से बड़े शब्दों में लिखिए, और इसको रूम में चिपकाइए 5.5 साल के लिए। क्या, कौन सी लाइन चिपकानी है? उस पे, उस कार्डबोर्ड पे क्या लिखना है जो आपके रूम में चिपके होगा कार्डबोर्ड, उस पे लिखना है कॉन्सेप्ट ऑफ दोष धातुमल इज लेस स्ट्रक्चरल मोर फंक्शनल। और मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि सेकंड ईयर में चले जाओगे, थर्ड ईयर में चले जाओगे, कल को आयुर्वेद की कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आएगी, बस अपने रूम में चिपका हुआ ये जो कार्डबोर्ड है, कार्डशीट है, उसको बस देखो, आपका आधा प्रॉब्लम उधर सॉल्व हो जाएगा। एक बार आपने अस्थि को हड्डी कह दिया तो खत्म हो गया। अरे खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। व्हाट इज अस्थि? अस्थि शरीर की धारण क्षमता। अस्थि इज धातु जहां पे स्थिर गुण, ये जो विंशति शारीर गुण है, देखो ये शरीर में जो भी है ना, ये सब कुछ शारीर गुणों का खेल है रे, और कुछ नहीं है। वाग्भट ने पहले अध्याय में बोल दिया रे, और कुछ नहीं है। गुरु मंद मृदु स्थिर विपर्य, क्या बोला? गुरु मृदु स्थिर गुण सूक्ष्म विशदा, गुण हमने बोल दिए। विंशति ही स विपर्य, आप इनके विपर्य निकाल लो, तो गुण नहीं बता रहे हैं, वो यहाँ पे 10 शारीर गुणों की जोड़ियां बता रहे हैं। आर यू गेटिंग? गुरुमंद हिमस्निग्ध श्लक्ष्ण सान्द्र मृदु स्थिरः गुणः सूक्ष्म विशदः विंशति स विपर्य। ये गुरु से लेके विशद तक हमने 10 गुण बता दिए। इसके विपर्य में और 10 आप निकाल लो, और वो 10 और ये 10 जोड़ दो, तो ये 20 हो जाएंगे।
वाग्भटाचार्य यहाँ पे 20 गुणों की बात नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ पे 10 जोड़ियों की बात कर रहे हैं, 10 पेयर्स की बात कर रहे हैं। और ये जो पेयर्स है, इन पेयर्स को जब हम समझेंगे तब हमको बॉडी रिलेशनशिप समझ में आएंगे। तो जेंटलमैन, अस्थि और वायु का आश्रय से रिलेशनशिप, यानी कि वो हड्डी है और हड्डी अंदर से खोखली है, तो खोखली है तो कुछ तो अंदर होगा ही, तो कुछ नहीं है तो वायु और आकाश है। इस तरीके से कुछ तो, इस तरीके से ये सिर्फ इतना सीमित नहीं है। यह है कि अस्थि यानी कि शरीर का जहां पे पृथ्वी तत्व का उत्कर्ष है, वहां पे हर जगह पे अस्थि है, हर जगह पे अस्थि है। अस्थि इज अ कॉन्सेप्ट, अस्थि इज अ कॉन्सेप्ट। अस्थि हड्डी नहीं है, अस्थि एक्सरे में आएगा वो बात नहीं है, अस्थि इज अ कॉन्सेप्ट। तो शरीर की बॉडी एलिमेंट्स को रिटेन करने की क्षमता यानी अस्थि है, ये स्थिर गुण का काम है। और शरीर की बॉडी एलिमेंट्स को आगे बढ़ाने की, आगे कैरी ऑन करने की क्षमता, ये चल गुण है, ये वायु का काम है। और ये वायु और अस्थि जब एक दूसरे के साथ बैलेंस में रहेंगे तब बॉडी के सभी रेट्स मेंटेन हो जाएंगे। आपका रेस्पिरेटरी रेट है 14 पर मिनट, आपका कार्डियक रेट है 72 पर मिनट। ये जब ज्यादा होता है आप उसको एरिथमिया कहते हो, ये जब कम होता है आप उसको ब्रेडिकार्डिया कहते हो। क्या है ये सिर्फ चलगुण का काम नहीं है। आप चलगुण को इन सेपरेशन नहीं ले सकते। आई एम स्पीकिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ही शांति से समझिए। आप वहां पे ट्रैकिकार्डिया हो गया तो चलगुण की वृद्धि हो गई, इस हिसाब से आपने नहीं समझना है। आपने समझना है कि चलगुण की वृद्धि हो गई यानी कि स्थिर गुण कम हो गया। तो ये स्थिर गुण आपके एट्रियाज में भी है, और ये जो आपके एट्रियाज में स्थिर गुण है, ये गुण कम पड़ गया है। तो आपने जब कार्डियक एरिथमिया का कल को पेशेंट आएगा तो आपने सिर्फ वात का चलगुण कम करने की आपकी सिर्फ आवश्यकता नहीं है, आपकी आवश्यकता है आप एट्रियाज के अंदर के स्थिर गुण को भी बढ़ाओ। आप एट्रिया में जो अस्थि धातु है उसको भी बढ़ाओ, और वो काम करेगी शालिपर्णी। चरक चिकित्सा कल को आप पढ़ोगे, शालिपर्णी सिद्ध पया इज मेंशन्ड इन रुद्रगतवाद। So that was all about, I guess I have exceeded my time limit. So थोड़ा सा आई एम सॉरी फ्रॉम माय बिहाफ ऑल्सो कि ये सब कुछ टेक्निकलिटीज में मेरा भी कुछ रोल था कि हम थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर पाए। आई गेस अनदर लेक्चरर का टाइम हमने 11 बजे का दिया है। सो इस हिसाब से ऑल द वेरी बेस्ट। आश्रय से रिलेशनशिप को समझना ये तो बात थी, लेकिन बातों बातों में आयुर्वेद को कैसे समझना है इस पे कुछ कमेंट करना मैंने जरूरी समझा। I am thankful to the Belgaum Ayurved College. Dr. Prathamesh, over to you. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, so we'll be having a question answer session. We have only 2 questions. So can I ask you the questions so that you can answer them? Yes, sure. Sure. Yeah. So the first question is by Raviraj P. Sir. He asks, can Manas be an Ashraya? Apart from Dushya and Mala, can Mana be an Ashraya, and how? This is again a very great topic of debate, whether मन is to be considered as a शारीर भाव। मन का आहार से पोषण होता है ये हम सभी मानते हैं, लेकिन देयर आर फ्यू रेफरेंसेस इन उपनिषदास कि जो मन एक टोटली अलग ही एंटिटी है और मन का पोषण आहार से होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं बर्गर खा रहा हूँ या दूध पी रहा हूँ उससे होता है, बल्कि मन के जो विषय है चिंतन विचारम वयम च, उनसे मन का पोषण होता है। ऐसा इंटरप्रिटेशन करने वाले भी कुछ उपनिषदिक स्कॉलर्स हैं। सो ऐसा भी मानने वाले लोग हैं कि मन का डायरेक्टली आहार से कुछ एक लिमिट के आगे संबंध है ही नहीं। सो ऐसा मानने वाले लोग हैं बीच में, और ऐसे कुछ प्रेजेंटेशंस मैंने सुने, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन ऐसे प्रेजेंटेशंस बीच में सुने और बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग उसमें हो गया। लेकिन वो सब कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करने पे कंक्लूजन तो यही आता है कि माय पर्सनल ओपिनियन इज कि यस, मन का संबंध निश्चित रूप से आहार से शरीर भाव। मन को भले ही मन एक अलग पदार्थ है, क्योंकि पदार्थ जो 9 पदार्थ कहे गए हैं, खादिन्यात्मा मनक कालो, नॉट पदार्थ बल्कि द्रव्य, खादिन्यात्मा मनक कालो दिशिष्ट द्रव्य संग्रह। सो ये जो खादी है यानी कि पांचभौतिक जो भी है वो मन से उन्होंने देखिए यहाँ पे अलग चीज एंटिटी बताई है। लेकिन सो आश्रय से रिलेशनशिप की जो बात चल रही है वो खादी के अंडर चल रही है, वहां पे मन का संबंध नहीं है। ऐसा टेक्निकली तो है पक्का, लेकिन कफ की बात आएगी, रस की बात आएगी, साधक पित्त की बात आएगी तो मन पे लक्षण तो जरूर दिखेंगे। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग खादिन्यात्मा मनक कालो दिशिष्ट द्रव्य संग्रह, तो मन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम खादी। पंचमहाभूतों के अंडर खादी आ गया, आदि, और मन डिफरेंट हो गया। तो ये आश्रय श्री भाव करके टेक्निकली तो इसमें नहीं ले पाएंगे एकेडमिकली, लेकिन प्रैक्टिकली हमको लक्षण मन के ऊपर मिलेंगे।
Yes, sir. So, and there is one more question by Dr. Mukambika. So she asks, sir, as discussed, Rasadhatu moves all over the body in the same way, even Raktadhatu also moves. So, while explaining Sarata, Rakta Sarata is explained, then why not Rasa Sara? It is why it is called as Twak Sara. Why it is called as त्वक्सार? It is simply because त्वक्सार रसारविति विद्यात, ये सभी हम लोग वर्ष हम सभी को पता है. सो बेसिकली त्वक से ही रस की परीक्षा होती है. त्वक इज द एनकोडिंग, बाहर का ये सबसे बाहर का लेयर है. सो दैट्स वाई बस इसको, मतलब इसका कुछ एकेडमिक आंसर दिया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग त्वक से रस की परीक्षा होती है. और त्वक में हीलिंग कितना अच्छा होगा उससे आप ये हरित ने कहा है कि त्वक में हीलिंग कितना अच्छा होता है उससे आप रस धातु कितना अच्छा है ये आप समझ सकते हो. सो ये परीक्षा करने के लिए ये अनुमानन्य भाव और ये शरीर के बॉडी एलिमेंट्स की परीक्षा के हिसाब से इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है. इसका एकेडमिक आंसर कुछ और भी दिया जा सकता है जो प्रोबेबली मैं अभी भी ना दे पाऊंगा, कुछ और उसको स्टडी करके और कुछ भी दिया जा सकता है. एक्चुअली कोष्ठ की जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसमें है. कोष्ठ की कॉन्सेप्ट में रक्तादि धातु उन्होंने माने हैं. कोष्ठ, शाखा और मर्मास की संधि, ये जो कॉन्टेक्स्ट है त्रिविध रोग मार्गों का, वहां पे जो डिफरेंट कोष्ठ की डेफिनेशन आई है तो उसमें शाखा की जो डेफिनेशन है वो रक्तादिशु शाखा का है. सो रक्त एंड आगे की धातु शाखा का है. सो कुछ स्कॉलर्स की मान्यता है कि रस को कोष्ठ के अंदर ही ले लेना चाहिए. सो ये भी इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल अप्लाइड पार्ट हो गया. Yes, sir. So thank you, sir. Thank you for clearing the doubts, sir. Thank you for the amazing session, sir. So we are very much grateful that you shared your insights on this topic, Ashraya Ashray Bhava. Thank you so much, sir. And in future, we would like to also collaborate because I know that because of the time constraint, you had to wrap it up. But I guess in future, we can have many such sessions. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Yes, Yeah, sir. Thank you so much, Thank sir. So for the delegates, we'll be starting the session, the next session in 5 minutes. So you can just stay connected or take a gap. Yeah, stay connected. Yes. Thank you.
Good afternoon, one and all. I, Dr. Kalani Kalati, welcome you all for the forenoon session of the Kriya Kaushalya 2020. Okay. I would like to take this opportunity to introduce the guest speaker for forenoon session, Dr. Ravi K.V. Sir. Sir has completed BMS from the SDM College of Ayurveda, Hassan, and Sir has completed MD in Kriya Sharira from the SDM College of Ayurveda, Hassan. Sir is having the 6 years of experience in teaching field. Sir is also a faculty member of Ayurveda in the RUGHS. Sir is a founder and director of Aptam Ayurveda Foundation. And Sir is presently working as an assistant professor in SDM College of Udupi. So today's Sir's topic is understanding the concept of Prakriti. With this brief introduction, I heartily welcome you, sir. Now I hand over the screen to you, sir. Welcome, sir. Thank you, madam. Am I audible? Am I clearly audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. It is my privilege
to speak among the esteemed guests. Dr. Pratibha Kulkarni was my teacher. Dr. Akshar Kulkarni was my teacher when I was doing the PG. It is my pleasure to share the stage with them. I thank the college and the institution for providing this opportunity to me. So coming to the topic. Yeah, today we'll be speaking on the topic of the concept of Prakriti and its clinical application. Hope the screen is visible. Yes, sir. Okay. So in this topic, we'll discuss about what you mean by Prakriti. So what are the classifications of Prakriti? So how the Prakriti is formed, what are its features and its application in maintenance of the health and in curing the disease. In the previous session, we saw an important brainstorming session where the concept of dosha dhatu was explained, and especially the topic where the three doshas, vata, pitta, kapha, what the sir said as a physiological entity and not the anatomical entity. So it is the continuation of the same. So when we see, so the Prakriti is not mere the presentation of an individual, in the form of genetics or presentation in the form of the somatic, or it is a total psychosomatic expression of an individual. Okay, so usually in the PUC or in the 10 plus, what we study is, so we study the genes and we have the various types of the genes, and in the genes they divide, they undergo mitosis, they undergo meiosis, and with the mitosis and the meiosis there will formation of the new entity, and this new entity will be having the features of the things which were inherited by the earlier genes. So earlier genes and chromosomes. So this was the things which we studied. Okay. So usually when we start with the BMS first year, Kriya Sharira. So when we see this, so it will be correlated, or the correlation will be done with that genetic material with the genes. Okay. So here it is not mere genetic material. It is the inclusion of whole environment in the individual. Okay, so in the future slides, we will see how the Prakriti has the things which are associated with the environment, which are associated with the indulgence of the food and all. So it can be said as a psychosomatic expression. So psychosomatic expressions which are derived from the parents, which are derived from the loka, which are derived from the ahara. So everything will be expressed in a form of the Prakriti. So the definition of the Prakriti, so it is one of the common definition which is regularly used. So definition says, Prakriti nama yatra janma maranantarala bhavini garbhavakranti same Prakriti nama yatra janma maranantarala bhavini garbhavakranti same swakaranodrika janita nirvikarini dosha sthiti. So Prakriti is one of the entity which is sustained from Janma till Marana. Okay, so it is formed at the time of the Janma, when the birth happens, when there is combination of the Shukra Shonita, and it is sustained till the Marana. Okay, so it is sustained till the Mrityu. Okay, so it is said as Prakriti Nama Yatra Janma Maranantarala Bhavini. So it is one of the factor, it is one of the entity which is present or which is formed at the time of the Janma and which is sustained till the Marana. So how it is formed? So Garbhavakranti Same. So because of aggravation of the dosha, Swakaranodrika Janita Nirvikarini Dosha Siti. At the time of the Garbha Avakranti, at the time of the Shukra Shonita Samyoga, there will be aggravation of the dosha. So this aggravation of the dosha will be happening because of its own reason. We'll see what are those reasons later. So because of those reasons, because of some reason, there will be aggravation of the dosha. So this aggravation of the dosha, usually when the dosha is aggravated, it will be pathological. We saw in the previous presentation also, vata vriddhi, pitta vriddhi, kapha vriddhi, everything leads to some or other disorder.
Okay, so here there will be aggravation of the Vata Pitta Kapha or aggravation of the dosha in single or the multiple entity or the all the three combination. But even though there is aggravation of the dosha, so here the aggravated dosha will be in the non-pathological form. Okay, so this non-pathological aggravated form of the aggravated dosha, which is in the non-pathological form, which is formed at the time of the birth and which is sustained till the death, is called as Prakriti. Okay, so Prakriti is nothing but another form of the dosha. So this dosha, which is aggravated, expresses its feature in the form of the Prakriti. So such entity is called as Prakriti. So here it is said as, so it is a state of dosha which is from birth till death, and especially we need to remember this one. This is in a non-pathological form. Okay, so this may support for the for the development of the pathology, but here when we speak, the Prakriti especially is in the non-pathological form. Okay, so this aggravated state of the dosha which is formed at the time of the birth and which is sustained till the death and which is especially in the form of the non-pathological form is called as Prakriti. Okay, so here we have some other definitions. Prakriti is Swabhavaha, Swabhavamiti Pratyatmaniyata Rupa, Prakriti Sharira Swarupa. So Prakriti means expression of one's own body constitution. Okay, so here an individual is said, so the special needs, the special features of an individual. So those, when it is expressed, so it is called as Prakriti. So Swabhava Miti Pratyatmaniyata Rupa. So what is mean by Swabhava? So individual specific constitution is called as Swabhava. So one of the most important definition of the Prakriti according to Acharya Charaka, Charaka Sutrasthana 7th chapter. So it is said as Doshanushayita hi esham deha Prakriti ruchyate. Dosha Anushayita. Dosha Anushayita. Anushayita means one which is closely associated. So what is closely associated? So Prakriti is closely associated. So closely associated to what? So it is closely associated with dosha. Okay, so the one which is closely associated with the dosha is called as Prakriti. So why it is called as closely associated with the dosha? So we have two types of the dosha. So one dosha in the form of the Prakriti, which is formed at the time of the Janma, and another dosha which is formed after the consumption of the Ahara. So the Ahara, the dosha which is formed after the consumption of the dosha which is formed after consumption of the Ahara, it nourishes the dosha of the Prakriti. Okay, so it is called as closely associated with the dosha. So Prakriti is one which is closely associated with the dosha. So you see, it is one of the famous shloka, Stanghradaya Sutrasthana, Shukrartasya Janmado Vishenaiva Vishakrimi, Daishyatisa Prakruteo, Hina Madhyotama Putak, Samadhat Samast Doshaja. Okay, so we'll see only the first line. The rest two line we'll understand little bit later. We are still in the definition of the Prakriti. So from the earlier sides, we saw that Prakriti means the one aggravated form of the dosha, which is non-pathological. Okay, so here there is a simile which is given. So simile given here is Vishenaiva Vishakrimi. Shukrartavasya Janmado means the same thing. The Prakriti will be formed with the combination of the Shukra and the Shunita, and there will be Janma. So at the time of the Janma, the Prakriti will be formed. So at the time of formation of the Prakriti, there will be aggravation of the dosha. So for that state of aggravated dosha, it is non-pathological. They have given simile called as Vishenaiva Vishakrimi. So this is one of the important simile when we are explaining the concept of the Prakriti. So what here Acharya is saying is, we have seen the various Vishakrimi. It may be snake, it may be scorpion, or it may be an ant, or any type of the Vishakrimi. So these Vishakrimis are having the Visha in them. Like snake is having some Visha, the scorpion is having some Visha. Even though those are having the Visha, those Vishas are not doing any harm, are not doing any injury to them. Okay, so such type of the thing is called as Prakriti. Okay, so we in earlier slides we saw that Prakriti is an aggravated form of the dosha. So even though they are aggravated,
as like Visha, which is present in the Visha cream, you're not hampering or not causing any injury to those entity. In the similar way, the aggravated form of the dosha are not causing any disease to the person. Okay, so such type of thing is called as prakriti. It is explained. So here further they are saying about the types of the prakriti. We'll come to it later. So we saw that there are some factors which are responsible for the formation of the dosha, which are responsible for the aggravation of the dosha. So it was repeated again and again. So we could not understand what are those factors which are responsible for the aggravation of the dosha. Okay, so we need something for aggravation of the dosha, right? At the time of the Shukra Sholita Samyoga. So those factors are called as Prakriti Nirmanakara Bhava. Prakriti Nirmanakara Bhava. So there are 4 Prakriti Nirmanakara Bhava. Okay, so Prakriti Nirmanakara Bhavas are the Karana because of which the dosha gets aggravated at the time of Shukra Shonita Samyoga. So they are Shukra Shonita Prakriti, Kala Garbhashya Prakriti, Mathur Ahara Vihara Prakriti, Mahabhuta Vikara Prakriti. Okay, so these are the 4 factors: Shukra Shonita, Kala Garbhashya, Mathur Ahara Vihara, and Mahabhuta Vikara. So these are the 4 factors which are responsible for the aggravation of the dosha. We will see individual factors. Shukra Shonita Prakriti. So Shukra Shonita Prakriti here Acharya says, Atra Shukra Shoniteva Yadrig Garbhavaste. Okay, so at the time of the Shukra Shonita Samyoga. Okay, so if Garbha has to be found, means the Shukra and Shonita should combine. Okay, so here whatever the Prakriti of the Shukra or the Prakriti of the Shonita or the whatever the dosha which is dominant in the Shukra and the Shonita at the time of the formation of the fetus will lead to the Prakriti of the fetus. Shukra will be having some dosha, Shonita will be having some dosha. So whichever dosha is dominant, if the Shukra, the dosha in the Shukra is dominant, then the Garbha Prakriti will be of that Shukra. If the Shonita dosha is prominent or the dosha is predominant in the Shonita, then in the Garbha, the Garbha Prakriti will be of the Shonita. So that is said as Shukra Shonita Prakriti. So next is the Kala Garbhashya Prakriti. The dosha predominant in the Kala and also in the Garbhashaya at the time of Shukra Shonita Samyoga. Okay, so dosha Utkato Bhavati. So whichever dosha which is Utkata, which is predominant in the Kala. Kala means when, so when the Shukra Shonita Samyoga is happening. Okay, so at that time, whichever dosha is predominant, so that might be a cause for the Prakriti or the Prakriti or the dosha which is predominant in the Garbhashaya. Garbhashaya here refers to the uterus. Okay, so the dosha which is predominant in the form of the Ritu at the time of the conception, or the dosha which is predominant in the Garbhashaya. Okay, so those may be the cause for the manifestation of the Prakriti. So this one is another one, which is most important one, the Matuhu Ahara Vihara. So Matuhu here refers to the pregnant lady. Okay, so what the pregnant lady does, what types of the ahara and the vihara the pregnant lady is doing. Okay, so in the final year Prasuti Tantra, you will see a specific set of the charya. Okay, in the Ashtanga, you have seen about the Dinacharya, Rutucharya. Dinacharya and the Rutucharya says what type of the ahara and the vihara one person has to do in the Dina, in the Rut, right? So similarly, in the Prasuti Tantra, we have some set of charya, which is called as which are to be followed by the pregnant lady. Okay, so those influences the prakriti of the garbha. Okay, so if the mother is doing more of vatala ahara and the vihara, then the baby might be having vatala prakriti. If the mother is doing more of, if the pregnant lady is doing more of pittala ahara and the vihara, then the baby might have the pittala prakriti. Okay, so depending upon the ahara and the vihara, dosha pradhanata in the ahara and the vihara, what the matu is doing, the prakriti might be having the same type of the prakriti. So Mahabhuta Vikara Prakriti. Okay, so Mahabhuta says the Mahabhuta. So whatever the Mahabhuta is predominant at the time of the conception,
that is at the time of the union of the Shukra and the Shonita. So those will get its strength in the due course of the time and will be expressed in the form of the Prakriti. Okay, so such type of the dosha pradhanata is called as the Mahabhuta Vikara Prakriti. Okay, so these four factors are the main entity which deviates or which distinguishes the concept of the Prakriti from the concept of genome. Okay, from the concept of genetics. Okay, so in the genetics, we don't have these many factors to say that the diet and regimen of an lady, the time duration at which the conception has taken place, so or the importance of the Mahabhuta. So these are not explained in the genetics. Okay, so I said the Prakriti concept is separate and genetic concept is separate. So among these four factors, among the Shukra Shonita Samyoga, Shukra Shonita Kalagarbhasya, Mathura Ahara Vihara, so whichever factor is dominant, so it is said as etani hi ena doshena ekena adikena va samanubhadyate. Okay, so there may be predominance of one factor, or there may be predominance of the two factor, or there may be predominance of the three factor, or there may be predominance of all the four factors. So depending upon the whichever dosha, hello. So depending upon the predominance, so whichever dosha is dominant, so set that type of the Prakriti can be seen in the Garbha. Okay. So next coming to the types of the Garbha, types of the Prakriti. Okay, so types of the Prakriti. So there are various types of the classification of the Prakriti. So Prakriti on the basis of the dosha, so they are classified as Ekadoshaja Prakriti, that is Vata Prakriti, Pitta Prakriti, and Kapaja Prakriti. Vidoshaja, that is combination of the two, that is Dvandvaja Prakriti, and Sama Prakriti, that is combination of all the three doshas. So again, the classification, so it can be done on many types. Doshaja, so that is Ekadoshaja, Dvidoshaja, and Samadoshaja. On the basis of the guna, we can classify it as Satvika, Rajasika, and Tamasika. On the basis of the Jatyadi Prakriti, so which is especially said in the chapter of Indriyasthana, so where the disease is explained, where the positivity and the negative, where the prognosis of the disease is explained. So there we have the Jatyadi Prakriti. So it is classified as Jati Prasakta, Kula Prasakta, Deshanupatini, Kalanupatini, Vayanupatini, and Pratyatmaniyata. And on the basis of the Mahabhuta, it is classified as Prithvi, Vayu, Akasha, Agni, and the Jal. Okay, so the Doshaja Prakriti will deal in detail, and Gunaja Prakriti, that is Satvika, Rajasika, and Tamasika, will not see in this presentation. We'll see about the Jatyadi Prakriti. So Jatyadi Prakriti, so I said earlier, so we have various factors here. So they are Jati, Kula, Desha, Kala, Vaya, Pratyatmaniyata. So on these factors, on the basis of these factors, the Jatyadi Prakriti has been explained. So Jatyadi Prakriti, so these are explained mainly in the, as I said earlier, these are explained mainly in the Vimanasthana. So, sorry, in the Indriyasthana. So Indriyasthana, there the prognosis of the disease is explained. So for understanding the prognosis, they have explained these many factors. So the first factor is the Jati Prasakta. Okay, so here Jati Prasakta is the characters which are linked with the race. It is the influence, Jati Prasakta means it is the influence of a race on individual. It is the influence of a race on an individual. Some of the race or some of the people who are belonging to the specific race will be having a specific characters. What Acharya Charaka gives example of Shuchitva. Shuchitva is cleanliness. Some race people or people belonging to the some race are more specific towards the Shuchitva. Some of the people who are belonging to the specific race are not specific towards the Shuchitva. Okay, so it is one of the attribute which is given according to Acharya Charaka. Okay, so depending upon those attributes, there will be expression of some features in those person. Okay, so those is called as Jati Prasakta.
Okay, so expression of the features which are related to race of an individual comes under the heading of the Jati Prasakta. Next is Kula Prasakta. So Kula here refers to family. Okay, so the influence of the habit and the cultures followed by a family. I in my home I have specific culture. I in my home I have specific habit. So because of that specific habit, because of that specific culture, there will be some set of features, some set of swabhavas will be expressed in my nature, in my activities. So those comes under the heading of the Kula Prasakta. Next is the Deshanupatini. Deshanupatini refers to the characteristics linked with the geographical location. Okay, so earlier the Desha were different, like we had the Magadha Desha, we had the Kalinga Desha. So the understanding or the characters linked with the Kalinga Desha, characters linked with the Magadha Desha were different. Now it is not like that. So it is the characters which is linked with the India, characters linked with the Pakistan, characters linked with the Bangladesh, characters linked with the China. Okay, so here the cultural habit, the culture, the socio-economical factors, so everything differs with the desha. So depending upon that, there will be expression of some characteristics in an individual. Okay, so I will give another example. In our college, in my college, we have some foreign students. Okay, so in Indian culture, what it said is a person, if the person is sitting in the class, not in the online class, in the regular class, he cannot consume the food while the lecture is speaking. Okay, he cannot speak in the mobile while lecture is speaking. But in the foreign countries, in the other countries, it is allowed. The person brings with the tea, person brings the food, snacks, everything. He keeps it on the table when the lecturer is speaking, he consumes. But same thing is forbidden in our culture. Okay, so when the lecturer is speaking, you should not consume the food. That is one of the unsaid rules. That is one of the culture which is followed. So that is called as Deshanupatini. So if you say the same thing, you cannot consume the food in the class when the person is speaking, then that person will feel uncomfortable. Okay, so there will be some sort of features which will be expressed for that sentence. Those comes under the heading of Deshanupatini. The next comes under the Kalanupatini. Time. The habits, the attitudes, the cultures which are associated with the time. Okay, so now is the mass culture. The mass culture was not there 6 months back. Now the mass culture has arrived. So this comes under the Kalanupatini. So according to the time, the culture, the behavior changes. So those comes under the heading of the Kalanupatini. Vaya Anupatini. The characteristics which are associated with the age. Okay, so the habits and attitudes among the age group differs. Okay, so a baby attitude, a child attitude, an adult attitude, and aged person attitude differs from time to time. Okay, differs with this age. So those comes under heading of the Vayanupatini. The last one is the Pratyatmaniyata. Pratyatmaniyata, here those are the attributes linked with the individual variation. Even though we have these factors, this one may also pervade. Okay, so what are those? So Pratyatmaniyata, it is the attitude and the habits which I have learned. Okay, so I have learned some good habit, I have learned some bad habit. So because of that good attitude, because of that bad attitude, because of that irrelevant attitude, because of the relevant attitude, I have some features, I have some expressions which are expressed. So those comes under the heading of the Pratyatmaniyata. So next is the Bhautika Prakriti. So Bhautika Prakriti is by Shuta. So he says there are 5 types: Pavana, Dahana, Toya. So Pavana, Dahana, and the Toya will be having the Lakshanas similar to that of Vata, Pitta, and the Kapha. Apart from that, Parthiva and the Nabasa Prakriti has been explained. So the Parthiva Purusha or the Parthiva Prakriti Purusha will be having Sthira Sharira and the Vipula Sharira, and he will be Shamavan. And Nabasa Prakriti Purusha will be having Shuchi, he will be having attitude towards the Shuchi, and he will be having a long lifespan. Okay, so this is according to Sushruta. And some authors are also explained that on the basis of the Mahabhuta, there are 31 types of the Prakriti. With one Mahabhuta, we have 5 Prakritis. With the combination of 2, we have 10. With the combination of 3 Mahabhuta, we have 10. Combination of 4 Mahabhuta results in 5 types of the Prakriti, and combination of 5
like all the 5 results in the combination of 1. Okay, so results in 1. So together we have 31 types of the Prakriti. So these are the Jati Prasakta, characteristics with the race, characteristics with the family. So this I explained. So next we'll see about the Lakshanas of individual Prakriti. So first we'll understand what are the Lakshanas according to Sharangadhara, and then we'll go for the other authors. What Sharangadhara says is, Vata Prakriti Lakshana, Alpakesha Krusho Ruksho Vachalas Chalamanasa, Akashashchari Swapneshu Vata Prakriti Naraha. Alpakesha, the Vata Prakriti Purusha will be having less hair. Less hair refers to the body hairs and the scalp hairs. So mainly scalp hairs. So here the person will be having very less scalp hairs. And he will be Krusha and the Ruksha. Krusha is lean. It is not emaciated. It is a lean person, not a very stout person, not well-built person, but a weak person. Ruksha Sharira. The Sharira, the body will be dry. Vachala, he'll be a talkative person, and in the dreams, he feels like he's flying in the sky. He's flying in the akash. Okay, we understand his dreams a little bit later. Karaka has classified Prakriti on the basis of the gunas. Okay, he says various types of the gunas of the Vata. The Ruksha Guna, Lago Guna, Bahu Guna, Shigra Guna, Shita Guna, Parusha Guna, and the Vishada Guna. So because of these gunas, the person will be having certain set of the features. So Ruksha, we know it is dry. So because of the Rukshata, the person will be dry. So in what matter he will be dry? So he'll be having Ruksha Sharira. Ruksha Apachita Sharira. He will be having dry body. His skin will be very dry and less nourished or a lean body. And his swara will be of Ruksha Kshama Sanna Sakta Jarjara. These are various types of the swaras which are not pleasant to hear. Okay, so Ruksha is very dry type of the sound, Shama is very thin and infirm, Sanna is exhausted sound, Sakta is hindered, Jarjara is similar to a broken voice or a voice of an aged person. Okay, so here the person will be having a not so pleasant type of the voice when we speak about the swara of the Vata Prakriti person. And he will be Jagaruka Swapna. Jagaruka Swapna or the Shwana Nidra. Okay, it is light sleep. The person is very easily awakeable from the sleep. So that is called as Jagaruka Swapna. And because of the Lagu is lightness. So because of the Lagu Gati, person will be having the Lagu Chapalagati. Okay, light and swift gait. The gait will be very unsteady. His activities will be light and unsteady. His diet will also be unsteady. So unsteady diet activities means, so today he might be liking something, tomorrow he's liking change, tomorrow he's satisfied. Today he's satisfied by 2 chapatis, tomorrow he's not satisfied by 2 chapatis. So here there is a steadiness is not there. So those comes under heading of the Lagu Chapalagati Ahara Vyahara. Vyahara is speech. Chalatvat anavastita sandhyakshi bruhanu osta jiva shiraskanda panipada. So chala here it is. So because of the instability, there will be always instability of the organs such as sandhi, the joints. There will be always shaking of the hand, always shaking of the eyes, always shaking his head. So all these body parts will be unstable. And the person will be pralapa, bahutvat bahu pralapa. So because of the bahuguna, the person will be always talkative. And bahu sira kandara pradhana. So it means to say there will be prominently visible arteries and the veins. The person is lean. So because of that leanness, the arteries, veins and tendons will be clearly and prominently visible. He'll start the activities very fast. He'll get the diseases also very fast. His immunity level is very low. So that is called as Shigratva Shigra Samarambha Kshoba Vikara. Okay. So his likeliness, his dislikeliness, his dispassionateness are very fast. Okay. So liking something today, tomorrow. It is not liking. Shigra Shutatvat Shutagrahino Alpasmutayascha.
Okay, his grasping power is very fast. So if you say something with this my class, you can understand the things, you can grasp the things, but if the same thing is asked tomorrow, you cannot repeat it once again. So that is called as Shrutagrahino Alpasmatayascha. The grasping power is very good, but remembering is very low. Shaitya Shita Asahishnava, he is intolerant to cold. When he is exposed to slight cold also, he feels like his body is stiff or there is excessive shivering. Parshyat Parusha Kesha Smashru Loma Nakha Dashana Vadana Pani Pada. So next guna is a Parusha guna. So because of the Parusha guna, there will be roughness of the hairs, scalp hairs, roughness of the body hairs in the form of the mustaches, or the palms and the sole will also be rough. And there will be cracking of the our body parts. Okay, there may be cracking of the soles or the cracking of the lips, there may be cracking of the palm. And when the person walks, there will be cracking sound from the joints also. That is Satada Sandhi Shabda Kaminascha Bhavanti. So with all these features, so this part is most important. The Vata Prakriti person will be having Alpa Bala, Alpa Ayu. So he is having less strength, less lifespan. Alpa Apatya, less number of the progeny. And Alpa Sadhana, less tools. And Alpa Dhana, the wealth will also be very less when compared to the Vata Prakriti. So these are the features of the Vata according to Acharya Tharapati. So Acharya Sushruta has explained the same feature, but he has explained some others also. So what are his contribution? So these are also important. So he has classified the features on these factors. Okay, so I will not deal in detail. I will say only the extra features which are explained by the Acharya Sushruta. So one of the thing which is explained here is Durbhaga. So Durbhaga here says the Vata Prakriti Purusha will be an unlucky person and he'll be having a Sthena Guna. Sthena Guna refers to a thieving attitude and he will be a jealousy person. Okay, so he'll be always jealousy, and his nidra is always chala nidra. Okay, he always likes to roam in the places. Okay, he's such a type of the person who cannot sit in one place. He always likes to roam from one place to another. And danta khadi. Okay, so eating the nail and what do you say, teeth. Okay, so that is danta khadi. And here the Acharya says about the Anukatva. Acharya Sushruta says about the Anukatva. Anukatva refers to Swarupa Chestha Anukarana. Swarupa Chestha Anukarana with what? So with the animals. So here the Vata Prakriti person will be having the Swarupa Chestha Anukarana, or the similarities in animals such as cow, rabbit, camel, dog, eagle, crow, and the donkey. Okay, so these are the few features according to Acharya Sushruta. So next, coming to the Pitta Prakriti. Pitta Prakriti Purusha, Akale Palitervyapto Dhimang Spedi Cha Toshanaha, Swapne Jyotisham Drishpa Pitta Prakritiko Naraha. The Pitta Prakriti person, in the previous class, Dr. Akshar had told that Pitta Prakriti, if it is Pitta, if it is Tikshna, leads to the aging. Okay, so here the same thing is happening in the Pitta Prakriti. There is excessive Tikshna Guna of the Pitta. So this excessive Tikshna Guna, excessive Ushna Guna, there will be premature graying and premature falling of the hair. So same thing with Akale Palite Vyapto. So here premature graying of the hairs is happening, and he is a very intelligent person. Pitta Prakriti person is a very intelligent person, and he is always a short-tempered person. And in the dreams, he sees Jyotisham. Jyotisham here refers to fiery things or the fiery objects. So Acharya, he has classified the gunas of Pitta, which are responsible for the manifestation of the Prakriti. So they are Ushna, Tikshna, Drava, Vesra, Amla, and Katu. Amlakat. Okay, so on the basis of these gunas of the Pitta, there will be expression of the Prakriti. So Ushna Guna. So Ushna Asaha. So because of Ushna Guna, the person will be intolerant to the heat. The Vata Prakriti was intolerant to the cold. He'll be having Ushna Mukha. He'll be having Sukumara Avadata Gatra. He will be having a delicate body and a fair complexion. So here the fair complexion will be towards a coppery colored fair complexion.
and he'll be having a huge number of the moles, freckles, and the blemishes on the skin. Prabhuta Vipluvenga Tilapidaka. So because of the Tikshna Guna, because of the Ushna Guna, he'll be having excessive hunger and excessive thirst. Shipravali Palita Khalitya Dosha. There'll be premature graying of the hair, premature baldness, and premature wrinkling of the skin. Apart from this, his hairs will be very soft, coppery colored hairs. Okay, so there in the Vata Prakriti, it was a rough type of the hair, so it is soft and coppery colored hair. He'll be very aggressive person. He'll be having Tikshna Parakrama. His braveness will be more. His Agni will be more. So because of the Tikshna Agni, he'll be consuming excess food. So that excessive food, so how is consuming? So he gives a word as Danda Shuka. Danda Shuka refers to hog-like eating. It means eating everything, eating anything repeatedly. So it comes under the heading of the Danda Shuka. He'll be having a loose joint. Stila Mrudu Sandhi Mamsaha. Because of excessive consumption of the food and excessive consumption of the water, he'll be having Srashta Sveda Mudra Purisha. There'll be excessive urination, excessive sweating, excessive elimination of the fecus. So all this results in the Visrata of the Sharira. So because of the excessive sweating, there'll be Putiganda from the Kaksha Asya Shira. Katu Amla Guna results in Alpa Shukra Vevaya Apatya. So with all these features, the Pitta Prakriti person will be having Madhyama Bala, Madhyama Aisha, and Madhya Jnana Vijnana Pitta. According to Sushruta, he gives the color of the body as coppery colored. Okay, so his eyes will be coppery colored, Tamra Varna, his Dalu, Jivha, Osta, so everything will be coppery colored. He'll be Vali Palita Khalitya Justha. So same thing, excessive premature wrinkling, premature graying of the hair, Bahu Book. Okay, consuming excessive food. Shipra Kopa Prasada, he'll be getting angry very fast, but he will be also satisfied very fast. Medhavi, okay, he is a very intelligent person and he is what is a orator, a very good orator. Okay, and in the dreams, he sees all the fiery things. It may be Kanaka, Balasha, Karnikara, so everything are the fiery things. Okay, and then he's such type of the person, so who wants to give the things, who wants to donate the thing only when he's asked. Okay, you need to praise him. So when the person, Pitta Prakriti person is praised, then he will give the things. Okay, so that is what we call Pranametanateshu Amrudahu. Okay, and then here the person will be suffering from diseases such as Mukhaphaka. Okay, and finally coming to the Anukatva. So here Acharya Sushruta compares the Anukatva with the Bhujanga. Bhujanga is serpent, Uluka, owl, Gandharva. So Gandharva are the group of the people who are called as celestial musicians. So they like in dancing, singing, they like themselves to anoint. So same thing you can be seen in Pitta Prakriti person. He likes to anoint himself, he likes to dance, he likes to sing. Okay, so they are compared with the Gandharva. Yaksha, so the Yakshas, they are also demigods. They are described as the attendants of the Kubera. Okay, so here he is compared to the Marjara. Marjara is cat. He may be similar to the tiger, or he may be Vanara, or he may be similar to the symptoms. Lakshanas may be similar to the Nakula, that is mongoose. Let's come into Kapha Prakriti. So Shleshma, Gambira Buddhi Stulanga, Snigdha Kesho Mahabalaha, Swapne Janashya Loki, Shleshma Prakritiko Naraha. What here Acharya says is Gambhira Buddhi. Gambhira Buddhi. So here his concept or his mind will be very Gambhira. It is stable. Stulanga, his well-built body. He'll be having well-built body. The Vata Prakriti person had a Ruksha Kesha. Here, the Kapha Prakriti person will be having the Snigdha Kesha. In the dreams, he will be seeing like beautiful lakes, rivers, or sea, ocean. So if you understand these dreams, I said we'll understand the dreams later. The Vata Prakriti person was flying in the air. The Pitta Prakriti person was seeing the fiery things, and Kapha Prakriti person is seeing the beautiful things. Right. So here, those are the doshas which we are seeing in the dreams. Okay. So if you understand better, see the Vata Prakriti person's dreams will be irrelevant. It will be not understandable. It will be out of the concept dreams.
Okay. Someone flying in the air till today. So if he's flying with the flight and also that is fine, but without anything he's flying, that it is irrelevant till today. Okay, if he is getting such type of the dream, that means irrelevant type of the dreams, that means he is getting the vata, the swapna. If the person is getting the dreams in which his fear or the fearful dreams are happening, then it comes under the pittaja swapna. If the dreams are very pleasant, the person is fond of the dreams, very peaceful things are happening, happy things are happening, then we can understand that those dreams comes under the heading of the kafaja swapna. Acharaka classifies the Prakriti or they explain the Prakriti on the basis of the gunas, like Snigdha, Lakshna, Mrudu, Madhura, Sara, Sandra, Manda, Sinta, Gurushita, Vichala, So here, because of the Shleshma or Snigdha Guna, the person will be having the Snigdha Sharira. Earlier it was Ruksha Sharira in the Vata. Here it is Snigdha Sharira. It is Lakshna Sharira, so it is soft and shiny body. And the person will be a pleasant to look. Okay, he will be a beautiful and a handsome person. Prabhut Madhuryat Prabhuta Shukra Vyavaya Apatyaha. So there will be excessive amount of the Shukra, excessive more number of the children. Saratva Sara Samhata Sthira Shariraha. So his body will be well built. Upachita Paripurna Sarvaha. All the body parts will be well built. All the structures will be well built, but his activities will be very slow. His speech will be very slow. He'll be speaking very slowly. So initiation of the activities is very less or very slow. He is having the good Vyadikshamatva. His disease occurring is very less. His gait will be very stable and steady gait. He will be having less Kshuddha, Trishna. His body parts or the joints will be well formed and he is a very beautiful person. So with all these gunas, the Kapha Prakriti person will be having good strength, good amount of the wealth. So Vidyavanta, he is a knowledgeable person and he will be having a long lifespan. If we compare with the Prakriti of Sushruta, Kapha Prakriti as explained by the Sushruta, the same thing is explained. So he'll be a Priya Darshana. So he'll be a pleasant to see, handsome person. Madhura Priya, he likes more sweet. Okay. So here the more thing is he is having a good knowledgeable. Okay. Balavanta Chiragrahi. Okay. So his grasping power is very less, but he is having a good memory power. His swara is similar to Jalada, Mrudhanga, Simha, Gosha. It means to say it is a loud and clear voice. Okay, so dreams, we can see here it's a Kamala Hamsa Chakravaka. He sees a beautiful lake where the Kamala is there, the Chakravaka Pakshi is there, Hamsa is there. So those are the beautiful lake. Okay, and when we see about the attitude, he respects the Guru, Mana Ita Guruna. Okay, especially he respects his seniors, his gurus. So such type of the person is said to be Kapaja Prakriti person. The Anukatva, as said by Charaka, as said by Sushruta, he compares the guna of the person with the Brahma, Rudra, Indra, Varuna. So those are the Deva. And Simha, Ashva, Go, Vrusha. Simha is lion, Ashva is horse, Gaja, Go, Vrusha. So these are the various types of the animals which are having the similarities in the and the Chesta Anukarana. So these were the gunas of the Prakriti according to various Acharya. So now coming to the next part, that is what we call as application of the Prakriti. So what is the importance of the Prakriti? So importance of the Prakriti, we can understand in various factors. So if there's various factors, we can say it as one in the maintenance of the health, one in the curing of the diseases, and another in the kosha, another in the pala. Okay, so in all these factors, in all these concepts, we can identify the what is the importance of the Prakriti. Okay, so we'll see individual in the maintenance of the health. Samapit Anila Kapaha, Kechit Garbhadi Manava, Drishyante, Vatala Kechit, Pittala, Shleshmastata, Tesham Anatura Purve, Vataladya Sadatura, Doshanu Shaita Hiesham, Deha Prakriti Ruchyate. In the previous slides, we saw
what are the features of the Prakriti. So according to this shloka, the Kapha Prakriti person are Anatura and the Vata Prakriti person are Sadatura. So what do you mean by Sadatura and Anatura? Sadatura means the person who is more susceptible or easily susceptible for the diseases. Okay, so when the person exposes to some of the hetu, if he gets a disease very early, then such type of the person is called as Sadatura. A person is exposed to same amount of the hetu and he's not getting the disease, comes under the Uttama Vyadikshamatva Purusha, or who is having good Vyadikshamatva, who is having the good Pala. So such type of the person is said to be Anatura person. So here Anatura person is Kapha. Atura person is Vata. So if the Vata is Atura person, he has to take care of himself. He has to avoid the Nidana Sevana. Then the Swasthya can be maintained, or else the Swasthya maintenance will be very difficult. If you see the individual, the Vata Prakriti is Hina Prakriti, Pitta Prakriti is Madhyama Prakriti, and the Kapha Prakriti is Uttama Prakriti. The Vata Prakriti person should always avoid the Vatakara Ahara Vihara. Okay, so consumption of the Vatakara Ahara Vihara leads to the manifestation of the Vataja Vyadi in the Vata Prakriti Purusha, which is very difficult to treat. Same thing applies for each and every Prakriti, but the Vata is Hina, so he'll be more susceptible for the diseases. So such type of the Nidana has to be avoided. And when we speak about the Prakriti, Prakriti is one of the concepts which is explained in the Dasha Vida Atura Pariksha. So where it comes, so when the patient comes to the clinic, when the patient comes to the OPD, we have to examine the patient in 10 folds. In various types of the stages, we have to examine. One among them is the Prakriti. So with the assessment, we can know about the Agni and the Kosta also. The Vata Prakriti person is having the Krura Kosta, Pitta Prakriti person is having the Mrudu Kosta, and the Kapha Prakriti person is having the Sama Kosta. So if we are giving a Mrudu Dravya to the Vata Prakriti person, then he will not have the Shodhana. If the Pitta Prakriti person is given the Tikshna Dravya, then he will have excessive Shodhana. So this Ashodhana or Atishodhana should not happen. For that, we need to understand the Prakriti, we need to understand the Kosta, and then one has to give. The Vata Prakriti person will be having always Vishama Agni. So because of that Vishama Agni, he will be suffering from the diseases of the Kosta. Pitta Prakriti person is having the Tikshna Agni. Because of that, he will be always suffering from the diseases of the mouth. We saw Mukapaka is there, and other types of the diseases are there. So depending upon the Kosta, depending upon the Prakriti, depending upon the Agni, the person has to balance the treatment. Okay, so we discussed this. So Bala, Vata Prakriti person is having Hina Bala, and the Vata Prakriti person, Vadikshamatva is also very less. Okay, so because of this, the person will be susceptible for diseases. The same thing is explained. The Pitta Prakriti person is having Madhyama Bala, the Kapha Prakriti person is having Uttama Bala. So Vadikshamatva will also be Uttama. So one has to plan those things, and then one has to understand what is Vadikshamatva, one has to understand what is the Prakriti of an individual, and then one has to take him for the disease or take him for the treatment. Okay, so this I explained. So the concept of the Prakriti comes under the heading of the Atura Pariksha. So here we have to understand what is the Prakriti of the person for the treatment, and what is the Bala of the Atura and the Roga, what type of the Aushadhi has to be given. Okay, so in what Marga has to be given. So for that we need to know about the Kosta. Okay, so for knowing the Kosta, we need the Prakriti. And also we need to know about the Sadhya and Asadhyata of the Vyadhi. So Prakriti also helps in understanding the Sadhya Asadhyata of the Vyadhi, and also we can plan the Patya and the Apatya of the Vyadhi. So with this, the Prakriti importance lies here. Okay, so if we know the Prakriti, then we can understand these many things and we can plan the treatment. Okay, so these are the few articles which are published on the Prakriti, where it says the importance. Okay, so we know that the Pitta Prakriti person will be having premature graying of the hair, premature wrinkling of the skin. So those are the factors which are responsible for the aging. Okay, so if we control the Pitta, if we give the Pitta Shamana Chikitsa in Pitta Prakriti person, that aging can be controlled. This is
the effect of the Prakriti on the disease. Okay, so we have the Vata, we have the Pitta, and we have the Kapha. In the similar, we have the disease Prameha. Prameha is a Vataja Madhumeha. So here there is a relationship between dosha and the Prakriti. There is a relation between Vyadhi and the Prakriti. So it's a person suffering from Madhumeha, that Chikitsa should be Vyayama. If the Chikitsa is Vyayama, depending upon the Prakriti, we have to give. If the person is Vata Prakriti, then we cannot give excess amount of the Vyayama. Here, the dravya should be in such a way that it pacifies the vata and also pacifies the dosha, pacifies the disease. For that, we need to know about the prakriti first, and then understanding of the disease has to be done. Okay, so prakriti based a step towards personalized medicine. Okay, so where the importance of prakriti comes, so it is one of the questions repeatedly asked by the students. In the first year, we studied the prakriti, and when we go to final year, we are not seeing the prakriti. So it should not happen. It should not happen. Prakriti should be used for the personalized medicine. Okay, so we have to assess the prakriti of an individual from initial point, and then we have to understand what is the prakriti, and depending upon that, we have to go for the individualized type of the treatment. We saw the poster, we saw the Agni. If the person is having the Krura coaster and we are giving the Mrududravya, then the person will not have any type of the result with that medicine, and the person will start blaming the Ayurveda medicine like it is not helpful, it is very slow. Okay, so this should not happen. For proper treatment, we should understand the Prakriti. With that, we can have a personalized base of the medicine, and then the treatment will be successful. So this is about the concept of the Prakriti. And now coming to the nearest part. So for the exam, so the Prakriti can be asked in 3 areas. So we have 3 marks question, we have 5 marks question, and we have 11 marks question. So for the 3 marks question, it may come by the heading of define Prakriti. What are the types of the Prakriti, or explain Lakshana of Vataja Prakriti, Pittaja Prakriti, or Kaphaja Prakriti. So these questions may come in 3 marks. So this question may come in 5 marks, and these questions may come in 11 marks. Okay. So depending upon the question, we need to answer the question, and depending upon the marks. So if the question is define Prakriti and it is of 3 marks, we need to write any one shloka and explain the parts. Okay. So I will show you what has to be done. Hope you can see the PDF written material. Okay, so here, first I will show what should not be done. Okay, so and then we'll go what to be done. So this was one of the question which is asked. Okay, so here the question is define the Prakriti and explain the characteristic features of the Kapha Prakriti. Okay, so here if you see, there is no definition of the Prakriti which is explained. So here the Prakriti Swabhava Prakriti Pratyatmaniyata is explained, but here everything is just random. Okay, it is just mix up of the things. Okay, so Prakriti explanation is there, but it is very mix up of the things. There is no material or the no answer which is clearly said. Okay, so here we have the shloka like Gambhira Buddhi Stulanga Siktakesha Mahabalaha, but the explanation is not clear. So you need to write here is the Kapha Prakriti person will be having the stable mind. He'll be having a well-built body. His body will be snigdha. His hairs will be snigdha. He'll be having good strength. So these things need to be explained, but these things are not explained here. So these will not fetch you the marks. Okay, so these things should not be done. So I will show you another thing. Okay, so this is one of the ideal answer. Okay, so define Prakriti. So it should be very clear like this. Okay, so when the question is asked, so question number should be outside, and preferably this bullet should also be inside the margin. So here when we say, so we can see here, so what is shloka has been written, and it's
reference has been given here, and then we have a shloka here. So this shloka, so this explanation is given here, and again we have another shloka. So its explanation: Prakriti is one which sustained from birth till death, which is formed during the formation of the garbha. It is an aggravated dosha in the non-pathological state. So it is a simple explanation of this shloka which is written here. Okay, so then coming to the lakshana. So here, as it is a long answer, so the person need to write the shloka. So here the shloka has been written. So after writing the shloka, the individual line has been explained. So because of the snigdha guna of the kapha, the person having anxious body. So same thing what I explained. So it has been explained properly. Okay, so the manda guna, manda ahara vihara is playing solely. He is calm. Shita guna, his hunger is his little hunger, little thirst. So this explanation has been done. And as it is a long answer, the shloka of the Sharangadhara has also been explained. So such type of the things has to be explained when you are speaking about the examination part. Okay, so depending upon the marks, if it is 3 marks, then explanation with one shloka. If it is a 5 marks, a shloka with 5 marks question, then explanation as required for the 5 marks. And if it is for the 11 marks, what are the things required there? So it has to be explained. So coming to the conclusion, so Prakriti are the psychosomatic expression of an individual and not mere personality. So it is responsible or it is beneficial in the promotion of the health and quality of the life. It is responsible for preventing disease. It is also needed for understanding the patient care and need. Personalized healthcare facility can be done with the help of Prakriti. Disease management, reducing mortality and morbidity, minimizing drug reaction, reducing the trial and error approach can be achieved with the Prakriti. So this is all about my presentation. If you have any doubt, you can ask. Thank you, sir. Thank you for your pleasing and knowledgeable words. Sir, there is a question asked by Tushar Mishra. He is asking that during the conception, whose Prakriti is more dominant, either father or mother? It depends. Okay, so there is no such thing. There may be predominance of the father or predominance of the mother. It is called a Shukra Shonita. Whichever is dominant, that will be same. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. You have made this seminar and your speech was very simplified manner, and it is going to help to all the delegates in exam purpose also and for their practice purpose and knowledge purpose also. Thank you very much, sir. Here there is a question. Write a short note on Prakriti for 5 marks. Can I explain this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, I will take this. Write a short note on Prakriti for 5 marks. So when we are writing for 5 marks, so first we need to explain what do you mean by Prakriti? So define Prakriti. Okay, so the shloka which was explained earlier in the first slide, so that needs to be explained. So that makes the definition of the Prakriti. Or you can also go with the Shuprata say Janma, the Vishena, Vishakrime. So any one shloka need to be explained, which makes the definition of the shloka or definition of the Prakriti. Next, you need to write the heading, factors responsible for the formation of the Prakriti. So under this heading, you need to explain, you need to name the factors like Shukra Shonita Prakriti, Kala Garbhasya Prakriti, Mathurahara Vihara Prakriti. So you need to name those factors. Okay, just naming those factors enough. And then next, you need to write the heading as types of the Prakriti, and you need to write Ekadoshaja, Dvandvaja, and Tridosha. And need to explain the Vata Prakriti, Pitta Prakriti, and the Kapha Prakriti Lakshana according to Sharangadhara, the 2-line shloka which is explained. So that explanation is needed. So this makes the answer of Prakriti for short notes. I think that is clear. Yes, sir. Thank you very much, sir. Any other questions? And I wish all the best for the students who are writing their exam in future. Be prepared, study well. There is sir, another question, sir. What are the Shonita Prakriti, Kala Garbhasya Prakriti, etc. are effect on Manasa Prakriti.
No, Shukra Shonita, no, I have not dealt with the Manasa Prakriti. Shukra Shonita Prakriti, Kala Garbhasha Prakriti are mainly for the Charirika Prakriti. They are not for the Manasika Prakriti. So Manasika Prakriti is different concept. I have not dealt in this presentation today. What are the recent advances in the Prakriti assessment? Yeah, I had prepared for this, but as the time was short, I could not say. Can I speak for a few minutes? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So in the recent advances, the various what our higher bodies like CCM, it may be or other CCM like other bodies, they have developed softwares for the identification of the Prakriti. Like they are ready softwares, there you need to answer the question, and with the answering of the questions, the Prakriti will be assessed. So this is the Prakriti development which is done for the common people. Okay, so you need to open their website, and under that website you will get the things. We'll get the website, we'll get the link, and under that link you need to answer the questions, and the Prakriti will be explained. And with that Prakriti, we have the what we say. What are the rules and regulations which are to be followed by that person. In our college, we have developed a software. So you can see this software. I will run this software. You can see. So this is another type of the software which is developed. So here we have these questions. So it is very simple software. Only thing we need to do is we have to select whatever the things. So my height is around 6 feet, and then we need to go on answering each and every question. So we have the similes, like a few of the acharyas have told specific color for the teeth, and we have to choose from the colors. Okay, and then we have few of the acharyas have told about the colors of the eyes and the face, and everything has been explained. So these things has to be seen, and then depending upon that, we'll get the Prakriti. Okay, so final result, when we submit, we get the Prakriti, and with that, what we can have is the final result will be seen, and what are the rules and regulation, what are the Patya, Ahara and Vihara one person should follow, so that will be explained there. And in another recent advancement, you can search an article has been published on the Prakriti. So that article says what is the relationship between Prakriti and the genome. Okay, so that was done in Jaipur or BHU, I think. I don't remember. You can search in the Google. The article is said. So there is a relation which is developed with the genome, and it is not simple genetic transformation what we studied in the PUC and in the lower classes. It is much higher understanding of the genome is seen in that study. The Prakriti, when we see about the higher studies about the Prakriti, the Prakriti is one of the concept which needs repeated studying, repeated understanding. So with this repeated studying, with this repeated understanding, we can develop science based on the Prakriti, subject based on the Prakriti. Okay, so because it is like individualized medicine, what we say, the health and healthcare unit which is developed in the modern, the same thing can be developed in the Ayurveda with the recent understanding or the recent developments in the Prakriti. Thank you, sir. Sir, another question is this, sir. Okay, describe Anukatva in detail for 5 marks. So for the Anukatva, the first thing you need to do is you need to explain what you mean by Anukatva. So Anukatva, I said it is Swarupa Chestha Anukarana. Okay, so this is the definition of the Anukatva. So this Swarupa Chestha Anukarana has to be explained first. Then you need to explain the Anukatva. Okay, so what are the Anukatva of the Vata, what are the Anukatva of the Pitta, what are the Anukatva of the Kapha. So that is fine. So that makes the answer. Okay, so with that you need to explain, you need to translate the word, like what you mean by Bhujanga, what you mean by Uluka, what you mean by Gaja, Go, Vrusha. So first thing is what you mean by Anukatva, Swarupa Chesta Anukarana. So after Swarupa Chesta Anukarana, after explaining what are the Anukatva of Vata, what are the Pitta, and what are the Kapha, that makes the answer. Thank you, sir. Thank you very much.
I conclude the session by thanking you once again, sir. Thank you, madam. Thank you for the all the faculty members and all the office bearers of SPG and College for providing me this. Thank you, one and all. Now I request Dr. Arun Avinar sir for the vote of thanks. Good afternoon, everyone. I deem it a great honor and a privilege to propose the vote of thanks on this occasion. First, I wish to express a gratitude to our chief guest, the renowned Ayurvedic physician and our guru, Dr. Samir Naik sir, and our own beloved managing director, Dr. Mansi Ghatke ma'am, for being with us on this event. Your presence and gentle words were source of encouragement to all of us. Thank you, sir and ma'am. We also thank all the legendary speakers, Dr. Pratibha Kulkarni, Dr. Akshar Kulkarni, Dr. Prasad Pandkar, and Dr. Ravi KV sir for spending their valuable time from their busy schedule and sharing their boundless knowledge with us. Thank you, sir, and thank you, ma'am. A special thanks to all the enthusiastic delegates for their active participation and the principals and management of all the Ayurveda colleges across the Karnataka and India for motivating their staffs and students to join this event without whom this webinar would not be successful. And also I expect the same passion and zeal in our future programs. Thank you. My heartfelt thanks to the founder member, Shri S.B. Ghatge sir, our source of energy, Chairman Mr. Amit Ghatge sir, Managing Director Dr. Mansi Madam for encouragement, guidance and support. I thank our principal Dr. S.V. Gaddehalli Shetty sir and Organizing Secretary and Vice Principal Dr. Advesh Arkeri sir for their unstinted support. I owe a special thank to our coordinator Dr. Anil sir, co-coordinator Dr. Bhuneshwari Madam, Dr. Anita Madam, Dr. Prathamesh sir, Dr. Kalyani Madam, Dr. Mahesh sir, and a special thank to the technical team, Dr. Vishal Bunty, Mr. Vijay, Mr. Anand, Mr. Maruti, and Mr. Rishi, and all other teaching and non-teaching staff of our hospital and college to make this event Kriya Kaushalya a grand success. Thank you one and all. Now I request everyone to raise for the national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you one and all. Sorry for